on this, how these guidelines are important, you know, because we always feel, because हर एक guidelines में ऐसे आपको होगा कि application आपको, you know, you have to decide this can change, this is the general thing, but it can change according to the case. So we think, why then, if it can, it has to change, then why is this guidelines important, क्यों है ये guidelines? तो guidelines sets that you know platform or direction. आपका जो हेल्थ का एक रोड मैप है वो आपको पता चलेगा, लाइक जस्ट हाउ यू नो इफ यू वांट टू रीच समवेयर अगर आप जीपीएस में डालोगे इट टेल्स यू कि ये आपको यहाँ पे जाना है. सो वैसे ही आपको डाइटिशियन आपको बताएगी, यू नो हेल्थ रोड पे, आपको हेल्थ जो है आपको वो रोड पे हेल्थ की तरफ वो लेके जाएगी. बट वो कैसे, कहाँ पे मुड़ना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, सीधे जाना है, यहाँ पे रुकना है, वहां पे रुकना है, यू विल ओनली बी एबल टू नो व्हेन यू नो द गाइडलाइंस. So that is why knowing the guidelines are important. Now these are the some standard guidelines, you know, that you have to follow whenever you are searching your any, you know, Google, uh, you're searching for any guidelines. See to this, you know, that these are the some standard worldwide guidelines. Food and Agriculture Organization, FAO, WHO, USDA, DHHS, ADA, and AHA. These are some standard worldwide guidelines. So you can follow these guidelines whenever whenever there is a need. And we have special guidelines, Indian guidelines, जो Indian scenario को ध्यान में रखते हुए various जो आपके स्टडीज इंडिया में किए गए हैं, उसके बाद अपने खुद के हमने डाइटरी गाइडलाइंस बनाए हैं. सो यू हैव टू रिफर दिस गाइडलाइंस व्हिच आर, दिस इज द एनआईएन गाइडलाइंस. पहले 2016 में एनआईएन के आईसीएमआर गाइडलाइंस आए थे. नाउ इन 2020 वी हैव द लेटेस्ट, द मोस्ट recent nutrient requirement recommendations from ICMR and NIN. Then in different, you know, even in RSSDI जो डायबिटीज में ज्यादा, you know, रिसर्च इन डायबिटीज में काम करता है. देन वी हैव इंडियन इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन, पीडियाट्रिक इंडियन एसोसिएशन होती है, तो उनके भी कुछ कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसमें भी न्यूट्रिशन के बारे में कुछ लिखा होता है. सो यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो, बट दिस इज द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, डाइटरी गाइडलाइंस which are specially for, you know, diet. So in sub mein, you know, the basic guideline is like you have to eat a variety of food to ensure a balanced diet. तो ये आप कैसे करोगे? Now this is the pyramid कि जैसे first आपका जो एक ये है उसमें आपका it is just not filled with cereals, it has cereals and pulses. So the pulses is also having that much, you know, जो cereal का जो, you know, the position जो है वो आपको अभी you have to share it with the pulses are equally important. Next is your vegetables, and then your, you know, dairy and your if you're having a non-veg, then that, and the last is your fat. So your fat should be in a lesser quantity. So अगर आपका ऐसा हो तो your energy, your carbs, proteins, fat, fiber, vitamins, minerals, water, everything is in the balance. तो ये balance आपको करने में this guidelines, you know, help us. Now in this 2020 guidelines, there is a difference from the previous guidelines. Previously हम लोग RDA की बात करते थे, like the recommended dietary allowance. For, you know, we have to refer this values. So now in this recent guidelines, RDA is also there, but there is another value which is estimated average requirements, ER values. So this we have to, you know, take into account when we are evaluating the dietary intake. So we will see into detail कि क्या है ये exactly. RDA values are used for setting the safe nutrient intake for individuals. See, whenever earlier we used to plan, so we used to think, see, it is very difficult to achieve that RDA values. Macronutrient you can achieve, but you know, the small things, you know, your selenium, your iron, calcium, हर एक, you know, 20 nutrients को आपको, you cannot calculate this 20 nutrients when you
in everyday life, like you're doing a research, you have that much of time, then you might be doing. But even if you're trying to calculate that, it is very difficult to meet this RDA. So now in this latest thing, this problem is little bit solved. You just don't have to see this RDA. If you're not able to meet that RDA, then you can in between thing you can do EAR or RDA ke beech mein, the range mein. If you are able to meet that nutrient requirement, then that is a good thing. You don't have to see the RDA, you don't have to meet the RDA for all the nutrients. Then there is another term, that is a tolerable upper unit for nutrients. Like we have various various food which are fortified nowadays. Like your flour is also fortified, your salt is also fortified. So we have to take into account this tolerable upper limit. Sometimes what happens, and especially during this COVID, people are very much aware of different things कि हमें आयरन की जरूरत है, हमें विटामिन डी की जरूरत है, हमें विटामिन सी चाहिए, and then they take it like without any prescription. They start taking एक chemist खुद ही ये लाते हैं and self treatment चालू करते हैं. So sometimes एक tolerable मतलब एक safe limit से कभी कभी वो आगे चला जाता है. And when it exceeds that, there are side effects. Even if you are taking vitamin C ज़्यादा इसमें, तो there are side effects to over excessive intake of vitamin C also. Vitamin D, many people are taking vitamin D without doctor's prescription. So this is a very a very dangerous thing. So this you have to be take into account the TUL values also when you're prescribing the diet. In this previously RDA थोड़े ज़्यादा होते थे. Nowadays अभी जो recent है उसमें से certain nutrients के requirements थोड़े कम ये हो गए हैं, because bioavailability of the nutrient is also taken into account. Bioavailability मतलब आप उसको बोल रहे हो कि इसको particular 400 या 500 मिलीग्राम इसको कैल्शियम चाहिए या विटामिन B12 certain level तक चाहिए, but क्या वो अपनी बॉडी को इतना अवेलेबल है, whether we are able to utilize that nutrient, that was not taken into account in previous guidelines. जो अभी के guidelines में bio availability भी in most of the nutrients में wherever possible the newer guidelines has taken into account. So if we see the RDA, what is RDA? It is the daily dietary intake level that is sufficient to meet the nutrient requirements of nearly all healthy individuals in particular life stage and gender group. मतलब एक पर्टिकुलर जो भी एक कम्युनिटी है उसका most of the healthy individual will be able to meet if that values. If you are taking that much intake, if he is taking a calcium intake this much, तो पूरे community का if that particular community is taking that, so it is sufficient to meet that nutrient level. And what is EAR means? It is a daily dietary intake level estimated to meet the requirements of half of healthy individual in particular life stage and gender group. So now, even if you are able to meet half of the healthy individuals requirement, then that is also fine. You don't have to go for meeting the RDA. You can now go for EAR. If you consider EAR values, then you should be more than happy. Okay, now I'm able to EAR, I'm achieving this EAR, so that is okay. I don't have to rush to what do you say, RDA आपको करनी ही है, meet करनी ही है. You don't have to see this RDA values every time. So it has become more realistic, you can say. The TUL, that is the highest average daily nutrient intake that is likely to pose no risk of adverse health effects to almost all individuals in general population. यही मतलब जो भी एक साइड इफेक्ट्स इसके एक लेवल तक ये होना चाहिए, उसके if it exceeds that level, then you will pose adverse health effects. So fortification also now
is going to be, re-evaluated कि whether it is really really important. And even you don't have to every time, अगर patient आपके पास आता है, if you're doing that dietary assessment और आपको पता चल रहा है कि okay इसको iron या particular calcium उसके diet में से जा रहा है, so you don't have to tell him कि आप ये fortified iron fortified and vitamin D fortified flours लो. It is not at all required. Safe intake, it is that recommended daily average intake levels, estimates of nutrient intake by a group of healthy people that are assumed to be adequate. So एक safety level है, उसके आगे आपको नहीं जाना है. So now the dietary planning of population. जब भी आप एक community का diet plan कर रहे हो, community का diet evaluation या ये कर रहे हो, तो EAR values should be used, not the RDA values. तो आपको जब भी आप कम्युनिटी हर एक एक कम्युनिटी आप देखोगे गुड पॉपुलेशन का आप स्टडी कर रहे हो, सबको एक जनरल ये दे रहे हो, जनरल गाइडलाइंस दे रहे हो, तो यू हैव टू सी ईआर वैल्यूज को आपको मीट करना है. यू डोंट हैव टू गो फॉर आरडीए. बट व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर इंडिविजुअल लेवल, so there you can use your judgment कि जैसे मैंने आपको बोला कि when you're judging it, आप assess when you're doing the assessment, आपको पता चल रहा है कि इसके डाइट में ये nutrients है, so you don't have to go to meet that RDA, you can go for EAR. But if you know कि नहीं इसके डाइट में ये नहीं हो रहा है, see to it that you are taking that RDA values so that you are more than what do you say, you can relax कि okay now at least इसमें इतना तो नहीं, but at least इसका मतलब RDA अगर मीट ये कर रहे हैं तो he will get that much of nutrients properly. So if you say aims to minimize the risk of inadequate intake of nutrients, RDA can be taken as a guide for certain nutrients. If taken, diet should be monitored for excess intake and modified accordingly. If meeting RDA is difficult, the intake should be between EAR and RDA. So it is very clear, अगर आप RDA दे रहे हो, you have to monitor that diet frequently कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए RDA, because again this has become more relevant because of COVID times, जहाँ पे everyone many people are taking the over the counter supplements, तो काफी ज्यादा ये हो रहा है, इवन आरडीए से ज्यादा हो रहा है. सो आरडीए से ज्यादा अगर किसी न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन इनटेक हो रहा है, so that is not a good thing. And if it is so you have to evaluate that thing, and in certain thing while assessing आपको अगर लगे कि ये पर्टिकुलर इसका कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, से फॉर एग्जांपल इसका आयरन मीट नहीं हो रहा है या इसका विटामिन डी मीट नहीं हो रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू मीट आरडीए रिक्वायरमेंट, कि कोई वेजिटेरियन है तो B12 आप नहीं उसका मीट कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, डाइट में उसके पसंद नापसंद यू हैव टू टेक दैट अकाउंट, सो वो नहीं आपको मीट कर रहे हैं, तो यू सी दैट इट इज बिटवीन योर giving that vitamin B12 in the range of EAR and RDA. So it is very clear now. For the population, you have to see EAR values. When you're planning individual diet plans, you can go for RDA wherever possible. If it is not possible to meet the RDA values, then go for the values between EAR and RDA. If you're able to meet RDA values, monitor that diets, and if it is exceeding, then you have to modify that diet so that excess, you don't have to cross that TUL levels, that is a tolerable upper limit. So that is not good thing. The next is the reference body weight. Now the reference body weight is also now changed because now we have India has done a lot of studies. The National Nutrition Monitoring Bureau, this is the latest one, National Family Health Survey 2015 and 16. Then World Health Organization has also done Indian studies. For pediatric, we have Indian Academy of Pediatric, which has done a lot of studies into this reference rate. And what they have seen is that now we have reference weight is now increased. Like a male reference weight
in the age of 19 to 39 years is 65 kgs, whereas in earlier we considered between ages 18 to 29, and the weight for the reference body weight for male was 60 and now it is 65, and in female now the recent one says it should be 55 kgs, whereas the earlier guidelines stated that it should be 50. So now when the reference body weight has changed, so certainly the energy, carbohydrate and other things, proteins, have also changed. uh, See, now the energy, like we all know what is BMR. So now in the olden range, we all olden data, we had reduced 5% of we have made 5% reduction from the WHO and FAO data, but now we have made 10% reduction in male and 9% reduction in female for BMR, because we are the thin Indians. We have more fat in our sorry, we have thin fat people, like we have more fat in our body. Our BMI must be normal, but still we have more percentage of fat. So now when we have more percentage of fat, so we have less biologically active, metabolically active tissue. So our BMR is, we don't require that much of calories. We are requiring lesser calories now. So now there is a 10% reduction for males and 9% reduction in females. The latest guidelines have also taken into account the physical activity level. We Indians have a very low physical activity level. Very few people are very heavy workers and all. They are having a good physical activity level, but most of the Indians are having low PAL level, low physical activity level, and that has also taken into account while designing the energy requirements. Now, if you say pregnancy and lactating women, there is not much of change. Whatever the earlier we were following, like 300 calories more for pregnant ladies, that we are following, and lactating women also, whatever the extra calories that is required for the milk production, that is around 200 to 300 calories. So you can give that much of calories. There is no change in those uh, energy requirements. For infant and children up to 6 years of age also, there is not much of a change, just 1 or 2 calories per kg body weight difference is there from the WHO data. And the above 6 years also, we have to see the same, we have to follow the same requirements. The lot of emphasis is given on the increased physical activity level for children. We have to encourage children to get more physically active. It has become a challenging in this COVID times, but we have to encourage children, especially the growing children, to they play on the grounds. They are active, energetic, they are doing some physical activity, uh, to prevent the health complication, because nowadays the type 2 diabetes is also very prevalent in children. So now if we make a comparison between the ICMR 2010 and 2020, and if we see that in men, sedentary work and moderate work and heavy work, there is not much of a difference between a moderate work and heavy work, just 20 calories difference. But there is a lot of difference in sedentary work. We are requiring very less, lesser calories than the previous one. Earlier the uh, RDA levels were 2320 and now it is 2110. Likewise, in women also, if we compare the data, the sedentary work, there is a lot of difference, and in moderate and heavy work, there is not much of a difference. So, a average, a sedentary male without any health complication will require 2110 calories for this, to maintain this weight 65 kgs. He should not be overweight, then he will require 2110 calories. Similarly, for a woman
who is not underweight, who is not overweight, and who is not having any health complication will require around 1660 calories. Now this difference, if the major difference is because we are now, it is revised, BMR is much lower than the previous one, and the PL, the physical activity level, is also very lesser, and so naturally now the caloric requirements are also lesser than the previous. um, so now, um, initially we used to refer the Harris Benedict's equation. Now a Mifflin St. George equation can be, we can utilize this to calculate the BMR. And the formula, as you can see, for the males, it is 10 into weight in kgs plus 6.25 into height in centimeters minus 5 into age in years plus 5. And the female, the first initial part is the same, only the last part is minus 161. So if we consider that, if you want to calculate the BMR for a male whose weight is 75 kgs, height is 165 centimeters, and age is 50 years, the BMR can be 10 into 10 into the weight, that is 75, plus 6.25 into the height in centimeters square, minus 5 into age, that is 50, plus 5, so it comes around 1536. So 1536.25 calories, so you can round about 1540 kilocalories. So you can plan a 1540 kilocalories diet for this particular person whose weight is 75 kgs and height 165 kgs. So he will require only this much of calories to maintain his weight. Now, for elderly male whose weight is 65, you shouldn't go below 1700 kilocalories per day. And for female, you shouldn't go below 15 kilocalories per day. This you have to, ensure, because a lot of elderly people, they have a various issue, eating issues, they are staying alone, or there is nobody to cook food, so they might not be able to have this much of calories, or sometimes they are having more than this calories, but they are not nutrition, like they are the quality, there is no quality of nutrients into their diet. So you have to see when planning for the elderly people. Now there is a proteins also, there is much of a change. In the previous values, the RDA for protein was zero point 0.8 to 1.2, and now it is around 0.83 grams per kg body weight per day for all healthy Indian adults. So the protein requirements have become lesser. So there is a lot of questioning, a lot of controversy. Why? Because we are a cereal eating nation, where we are already not having enough of proteins, and now the idea is saying to cut down the protein requirements. So what is it? So it doesn't mean that you have to cut down the proteins. I mean, you don't have to cut down much of a protein, but you have to see the quality of protein. It should be of high quality proteins. We are going to discuss this into detail, why this is happening. Just get cleared with certain terms. Why this earlier there was a more what do you say, more requirements of proteins, because earlier for deciding the protein quality, the PIDCA score were considered. What is PIDCA score? Protein digestibility corrected amino acid score. So that was considered, and in the latest guidelines, it is removed, and now we are having a newer, a better protein quality index, that is the DIA score, that is the digestible indispensable amino acid score. It is based on the true iliac digestibility of individual amino acid. And like, how will you achieve, like, if you are giving zero point 0.8 kilocalories, how will you fulfill the requirements? The quality or the distribution of protein is very important.
the cereal, legume, milk composition of the diet should be 3:1:2.5. So it is just not the cereal. You have to reduce the cereal consumption. You have to increase the legume pulses consumption, and also you have to you have to have the milk or a dairy thing you have to incorporate into your diet. So a big question in the those people who wants to go lactose free or dairy free, it is while deciding or while planning the diet, you have to see the quality of protein should be good. Like you can achieve zero point 0.8 kilocalories by just having cereal legume combination, but then you're not getting enough of amino acids, good quality proteins. You're not able to fulfill your uh, requirements or the functions which the proteins have to do. So you have to include a good range of good quality of proteins into your diet. Now, what this PDCA score means is, like, for earlier for around 20 years we use this protein quality PDCA score for protein quality evaluation. But what does it do? It is a method of evaluating the quality of protein based on both the amino acid requirements of humans and their ability to digest it. The PDCA takes no account of where the proteins have been digested. Similarly, amino acids that are lost due to anti-nutritional factors present in many foods are assumed to be digested according to the PDCA score. Means what? जो भी हम लोग proteins खा रहे हैं, PDCA score assume that whatever proteins we are eating, it all got digested, and we all got that proteins into, like, we could utilize that proteins whatever we are having proteins. But it was not the case. Many of the proteins were not digested, and we are not getting that proteins. Even if we were having more of proteins, we were having more than 1.5 grams of proteins per day, but the amino acid requirements we were not able to fulfill because the proteins were not digested properly. uh, so now the focus was more on nutrient density. The focus earlier was more on nutrient density, and we missed out this bioavailability. Whatever we are having protein, we are able, whether we are able to utilize that proteins was not taken into account. In recent one it has been taken into account, and that is why the newer protein requirement is saying 0.83 grams per day you can have. So there were many researches which were carried out. I think the same topic I had presented in the IdeaCon 2019, where we discussed about this PDCAs and DIA scores and all. Uh, so this same, the Indian diets were majorly cereal based. The quality of the cereal protein is not optimal because it is limiting in the lysine, and the digestion, absorption, utilization of cereal protein may not be complete. Environmentally beneficial plant sources such as pulses high quality proteins have high quality proteins, but their digestibility is thought to be incomplete. Again, the same thing, that we are not able to digest that much of protein. Using the newer and more accurate stable isotope method, it was found that the daily human requirement of indispensable amino acid was greater than previously thought, and this led to a major reappraisal of excessive essential amino acid requirements. So Dr. Anurag Krupa had done a lot of studies into this protein quality amino acid requirement, and he is the same person who is involved in this designing or into this formulating this IDA 2020 guidelines. So this again, this digestibility dia score that was taken into account to overcome the concern related to PDCAs. A FAO report recommended replacing PDCAs with the new scoring
system termed as the DIAS, that is the digestibility indispensable amino acid score. And in this, the limiting amino acid score is corrected for the specific true ileal digestibility. What it exactly done is like it studied, whether that, ileal digestibility also, because earlier only the digestibility in the stomach or the upper part of that intestine was taken into account. Now they studied the ileal digestibility also. So it come to their notice that the indispensable amino acid we required more than the previous thing. Uh, so they done a lot of research in different items. They studied the spirulina, egg white, and boiled egg and chicken meat, and they had seen the mean indispensable amino acid score. So if you can see the egg, and if you compare the egg and the meat, or if you compare the spirulina and the wheat, it was more or less the similar thing. So the same you know the method was used for study this indispensable amino acids in score of different food items. So if we see this, uh, this is the various dia scores of different food sources. You have your whole milk powder, your soya protein concentrate, pea proteins, and almonds, rice proteins, etc. This is a very good what you say, a basis for deciding which protein to go for. If you see the quality of proteins, if you see this sorry if you see this row, it says this, which is a good quality of protein. So when we say that we are having 0.83 grams of proteins per day, we have to make this combination of different foods. If you're assessing the diet, and if you see, if you find that the patient is not having a good quality protein, he is just having the proteins from the low quality and the good quality, then probably you will have to increase the proteins. But if he is having a good portion of this high quality proteins, then probably a combination thing, you can work out a combination of these foods, so that the his amino acid requirements are fulfilled. So the newer guidelines also recommend the same. The combination of food, the even distribution of food is also important. This is very important nowadays to plan food. When the patient is having, everyone is very much concerned now about proteins, especially the people who are going in gyms. The gym instructor will tell आपके diet में proteins नहीं है, and suddenly they become more aware of proteins, and they feel कि ओके मैं ये सब तो मैं नहीं खा सकता, मैं दाल वगैरह नहीं ले सकता, मैं ऑफिस में कैसे लेके जाऊं दाल एंड ऑल. सो ही विल नॉट हैव. सो एक प्रोटीन्स बस वो पाउडर ले लेते हैं, मैडम एक प्रोटीन पाउडर ले लो, और that job also is done by the gym instructor. He will give him some X protein powder, and then he says कि okay आप ये ले लेना, आपका protein requirement is fulfilled. तो वो ज्यादा ले लेंगे, and they are very, मतलब they are relieved कि okay now I'm getting protein requirement. So it is not that case. Even if he's having more proteins in one meal only, he will not be that proteins will not be able to utilize properly. So you need an even distribution of proteins. There is a lot of studies into muscle cells. If we see that we are having a very less muscle score, proteins muscles में बहुत कम है. So that is the sarcopenia. So we are having the sarcopenic obesity also. We are having low muscles, we're not having proteins in that muscles. So this is the distribution of proteins is also very important.
The combination of food is also very important. So distribution means you have to have the proteins in all your main meals. You can't have just in one meal. Breakfast में खा लिया या dinner में खा लिया, lunch में नहीं खा लिया. So no, you're not able to, that protein, you're not able to fulfill that protein. और जो भी आपने खाए हैं, your body is not getting that much, I mean, it's not able to utilize that proteins well. So you have to distribute that proteins evenly throughout the day. So breakfast में भी आपको चाहिए, you have to give in lunch also, and you have to give in your dinner also. Then combinations you can make. दाल नहीं दे पा रहे हैं, is not able to take दाल, तो sprouts दे दीजिए या दही दे दीजिए. But you see to it, it is not just cereal pulse, cereal pulse. You have to give, a milk products also, paneer also, if they are, a vegetarian. And if they don't want to have that, then you have to again put your brains ki proteins mein kahan se do. Then you have to see this, peas and all things combination you have to do. See this, this dia score, maybe, this uh, like labeling, when we have this labeling. So this studies has also, uh, given the suggestion that the label should include this dia score also. So if that dia score is there, then we are able to make, uh, we are able to select the proteins, or the select the source of protein, or select the food properly. um, Okay, so the protein quality indexes should be used as a criteria to identify and endorse foods or formulations to be of a certain quality of protein. So for pregnancy also, the protein requirements are, just slightly increased. It is 9 gram per day for the second trimester, and 21.2 gram per day. It is not per kg body weight, it is per day in the third trimester. And you don't have to, there should be only just a gestational weight gain should be only around 12 kgs, 8 to 12 kgs, not, or 15 kgs, not more than that. If we see the fats and oils, the requirements of optimal fetal and infant growth and development, maternal health, combating chronic energy deficiency in children, and diet related to communicable disease in adults. It has all taken into account, and the conscious efforts are being done to provide the physical activity based recommendation. Earlier, it was just according to your weight, or according to the source or something, but now it is more physically activity based recommendation. Means you have to see how much the patient is active, how much activity he is doing, and then you can decide about the fat. So for the sedentary, the upper limit for visible fat is 25, for moderate it is 30, and heavy it is 40. For the female it is 20 for sedentary, 25 for moderate, and heavy it is 30. So this is like a visible fat. So your total, if we see the percentage, the total fat should not go, should be between 20 to 30% of total calories. So as per the activity, you can, you can go for 22, or you can go for upper limit 30. The polysaturated, we are having more of, omega-6 fatty acid, we are not having more of omega-3 fatty acid. So you should make that conscious efforts, mindful efforts to give more of omega-3 fatty acid, so that there is less of inflammation. And if there is a less of inflammation, there will be low risk of developing your heart diseases or diabetes or the lifestyle diseases. The PUFA and MUFA ratio should be 0.8 to 1, omega-6 and omega-3 is to 5 to 10, and you should use more than one oil. Like we should always say you should rotate your oils, but it is like, if you are able to have that mixed oils throughout the day, that is a better this thing. Like if you can if you're for vegetables you are having one oil, then for, tadka, or for some salads making or some other products, you can use a different oil. So this is the ideal combination of oil. You can use groundnut or sesame, that is a till seed rice bran oil, plus mustard oil,
or you can use groundnut, sesame or rice bran oil plus canola oil, groundnut, sesame, rice bran oil plus soybean oil. This is according to 2016 guidelines. But I personally don't recommend canola oil and soybean oil because it is genetically modified oil. So you can go more of, a natural or a traditional oil like a mustard oil. So that is a good combination. Dietary fiber, again, it is based on energy. First time it is based on the energy intake, and it is around 30 gram per 2000 kilocalories is considered to be safe. For carbohydrates, both the quality and the quantity is important. uh, like if you're giving 50% of the total calories, but if you're giving more of simple sugars than the complex sugar, because nowadays people are, everybody thinks carb is the culprit, but we make carbs as a culprit because of our selection of carbs, or our, pattern of eating. We are making carbs as a culprit, but carbs is not a culprit. Because of the misconceptions, there are different fat diets which are just going on, like keto is not a fat diet if it is planned by a qualified person. But people randomly cut down the carbs, or what they do, like they're not having rotis, but then they're having that fruit juices, or some colas, or some, a big bowl of coffees and all, Starbucks coffees and all. So even if it is in that range, the carbs are in the range, but it is not a good quality, like good quality of carbs. It is more of simple. So you should go for more of complex carbohydrate rather than simple. And there should be minimum, you shouldn't go beyond 100 to 130 grams of carbohydrate per day above the age of 1 year. Because you need, you need glucose, you need that carbs for your brain. Your brain just utilizes the glucose. uh, like for your brain you need that much of carbohydrate, so you shouldn't go beyond this 100 or 130 grams of carbohydrates. Because a lot of people, uh, just don't have cereals at all, and they're just having the eggs and chicken and all. So you should be careful. Now if you consider the micronutrient requirement of 2020 with the previous one, so you can see there is increase of values in certain nutrients, and in some cases it is decrease, and there are only two nutrients which are almost the same, that is a magnesium and vitamin D requirements are similar. That was done in previously. Calcium, for calcium there is an increased requirement. For zinc also there is increased requirement, thiamine, riboflavin, vitamin B12 around 50% increase, and vitamin C is also increased, and the rest of the nutrients, now there is a lesser requirement of these nutrients. You can just see, iron requirement now it has dropped from 21 to 15. Now when, in 2016 the IFCT food composition tables also came. So if we see, or you go through that, so you'll come to know that iron from the different sources, there's a significant change, there is significantly reduced in especially iron. So now there is a lesser requirement of iron also. So this thing you can keep in mind while planning your diets. The sodium and potassium, nowadays there is a lot of increase in the hypertension and heart diseases cases. So the salt intake should be lesser, and ideally it is around 1 teaspoon, that is 5 gram per dl of the salt. And if you consider sodium, it is just 200 milligram per dl. So your 5 gram, that is 1 teaspoon of salt, will give you around 2000 milligram per dl. So you have to be careful
because it is just the salt, your 1 teaspoon of salt just fulfill your sodium requirement. And there is a lot of salt in our diet, invisible salt. People feel ki they are not having salt because they're not taking that table salt from the top. But the various thing like your papads and your chutneys or your chips or the other outside food, there is more of salt, so you should be careful with the salt. You have to balance your sodium to potassium, so you should have more of your fruits and vegetables also, you should have more. Now in 2016 NN guidelines, they have written that you always have iron fortified iodized salt. But now 2020 guidelines have come, so you cannot randomly say that he has to have a iron fortified iodized salt. You assess that patient, and if you find there is a need, if he's not meeting that RDA, he's not meeting that EAR, then you can go for the salt, fortified salt. Otherwise a normal salt is also okay. Now there is e- everyone, like in all guidelines, the physical activity has been given a lot of importance. Around 30 to 45 minutes of activity is recommended, and there should be a warm up and a cool down period also before and after exercise. Around a moderate intensity physical activity of around 45 minutes is ideal. You can go for all these types of exercises like balance and stretching, resistance and aerobic activities. A combination of this physical activity is will improve your stamina, your muscle strength, and the general well-being. So all this thing we just discussed, कि RDA या EAR को देखो, RDA को देखो and all that. So how will we plan, how will we design a plan which will comprise or which will take care of all these things? So it is just a simple thing, your plate. You should always see your plate, how it is. It should be nutrient dense, not the calorie dense. Whatever calories you're giving, see to that it is you're giving more of the nutrients, you're giving more of, there is a diversity of the different foods. Like we are always having this roti. So go for other cereals also, go for millets, try other cereals. There are a lot of many millets that are there in the Indian market there, which are locally grown. So try to incorporate, try to rotate between the cereals, so that because each cereal will have its own benefit, because it is not just carbohydrate, vitamins, minerals, there are a lot other factors, a phyto chemicals, and a biologically active compounds and all. So you will get benefit from doing this. You will get that antioxidant rich food. um, so try to have a variety of food, try to rotate your cereal, try to rotate your pulses, have different vegetables of different colors, and try to make it a quality. Go for a quality rather than the quantity. you know um, just it shouldn't be like कैलोरी एक ही आपको अपने मतलब लाइक 1500 कैलोरीज का आप दे रहे हो, तो इट इज अराउंड लंच आपका 300-400 है. सो ट्राई टू डिजाइन अ वेरी यूनिक और अ वेरी क्वालिटी डाइट फ्रॉम दैट थिंग, कि आप कैसे उसमें एक सीरियल है तो उसमें वो रोटी सीरियल जो चपाती का आटा है, ट्राई टू हैव दैट मोर ऑफ मल्टीग्रेन थिंग, मल्टीग्रेन कर दीजिए, या उसमें थोड़ा पल्सेस डाल दीजिए. Vegetables also, can have mixed vegetables. Somewhere you can add just that curd thing, you can add your seeds, you can add the oil seeds, and you can just make that thing very attractive. कि जैसे अगर आप कुछ मेकअप कर रहे हो, तो you can just apply your lipstick and कुछ whatever कॉम्पैक्ट वगैरह सब लगाया, बट हाउ यू डू इट, आप कैसे उसको अपने कैसे अच्छा आप आपके फेस को करेंगे, वैसे देखोगे, वैसा ही
for each patient you try to design a good quality food, a good quality plan, or good quality, a plate that is good. Also the sustainability of the diet is very important. See to that ki whether that patient is able to sustain that diet, is whether he's able to follow that diet for a longer period of time. It is not just ki chalo ek mahina kar liya, 2 mahina kar liya, weight loss kar liya, ho gaya. It is not like that. It should become his habit, it should become his lifestyle. So your plan should be such ki it should be, patient should be able to sustain it for even if he wants to have for a lifetime, he should be able to do that plan. The affordability factor also you have to see. You cannot just give exotic ingredients to make your or just to make your diet more better or a good quality. You don't have to prescribe or you don't have to advise a very exotic food which is not easily available. Go for local seasonal foods, and you can make a good balanced meal from the same local and seasonal food items. So now these are some practical applications while designing the plan. Your dietary intake assessment is the most important thing, कि how you are making it. हमने देखा कि इतने कैलोरीज देने हैं. सपोज आपका कैलोरिक रिक्वायरमेंट आ रहा है अराउंड 15,000, and if the patient is already having around 25,000 or 30, around 208,000 800 kilocalories, you cannot drastically change it to around 1,500 or 1,400. So it doesn't make it a more realistic diet. So your assessment is very very important, कि while designing क्या वो ले सकता है, at what time he can take. Make it, to make the diet close to his lifestyle, or close to his routine thing, timings and all. You have to assess that patient correctly. Then you are able to calculate that energy macronutrient intake from the assessed diet. Case analysis, always do a small case analysis whenever you get a case, कि इसको क्या करना है, इसके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या न्यूट्रिशन फाइंडिंग, क्या गोल्स होने चाहिए, what are his problems. Just analyze your case into your mind, when you're making that, when you're asking the questions, आपके दिमाग में ये सब चालू होना चाहिए, the analysis of that case, कि अभी मुझे ये क्या करना है, because you don't get that much of time when you're prescribing diet. See, and consider the weight, height, waist to height ratio to determine the fat distribution and BMI. It's very very important. Wherever possible, you can take the fat percentage also. Write the nutritional findings. Whenever you get a case, when you are assessing that thing and you come out with this problem, discuss that nutrition findings with the patient also, कि ये आपके डाइट में ये चीजें नहीं है, आपको ये चीजें करनी है. So it becomes more impactful. Set a target weight for obese people. This is very important. You can't just consider the ideal body weight for that person. It is not always realistic. Give calories according to the target weight. If you can give from idea considering IBW also, and you can just minus 500 calories from that. But you can also do it like you set a target and you can calculate the calories according to that weight. Clinical judgment is very 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 important for selecting various things. अभी मैंने ये आपको बोला, but your own judgment while assessing the patient, while planning a diet is very important. हर एक टाइम पे जो गाइडलाइन आपको कहाँ पे कैसे यूज करना है is your own judgment. So you have to keep your eyes and your brains open when you're doing it. When you're filling that form, it is not just that form तो कोई भी भर सकता है. Everything is very important. Give your mind, be present into that thing, and use your own judgment while designing the plans. Calorie change should be gradual. Any other nutrient
if you're prescribing any nutrient and all, it cannot be, you cannot just achieve 100% RDA or achieve 100% ER in just one plan. It should be gradual, so the follow-ups are very important. Call the patients periodically and make the changes periodically, so that it is more, you're making that diet more sustainable, more realistic, and more easy to follow that for the patient. So the compliance of the patient is also very good. Focus on macronutrient distribution and percentage. um, Write the diet prescription, like micronutrient distribution, like protein thing I've explained to you. Sometimes, zero point 0.8 grams per kg body weight and all we see, but when we are designing or we are making plans, in reality there are different things. किसी में proteins आपको बहुत कम देने हैं, like renal, या किस कभी लीवर का केस है तो आपको कभी कुछ कार्ब्स थोड़े ज्यादा देने हैं. सो कभी दैट थिंग 0.8 से कभी कुछ ज्यादा ये होता है या कभी कुछ कम हो जाता है. So always that macronutrient distribution, if you go by that thing, so it becomes easier for you to plan the diet. Always write the diet prescription, like for you, for the dietitians, whenever you're making any plan, make this table: macronutrient, amount, calories, percentage, like how much carbs you're giving, how many calories are there from this particular amount of carbs, and how much is the percentage of this carbohydrate, like percentage of total calories, how much of this carbs are from total calories. Similarly for proteins and fat. So make this diet prescription very clear. It becomes very easier for you to follow the, make the diet plans. The dietary, and for the patients also, when you're giving that thing, you always give all the advices to the patient, whatever any particular thing, any particular item you had given, write it in his prescription, because it is your prescription, it is the dietary prescription. Just like your doctor, how he's giving you the medicine prescription, this is your meal plan, your medical nutrition plan is your prescription. So make it look like a prescription, look like a medical nutrition plan. It is not just a random plan given by a random person. So the nutrition prescription designates the type, amount, and the frequency of nutrition based on individual disease process, disease management goals. The prescription should specify the caloric level, other restriction to be implemented. It may also limit or increase the various components of the diet, such as carbs, protein, fat, wherever possible. Always, you cannot calculate all the nutrients, but whatever relevant nutrients you must calculate. Especially in the early phase of early years of your field, you should always calculate any two nutrients: carbs, proteins, fat, plus any two other micronutrients you must calculate in your diet plans. Audience, write the nutrition prescription after the diagnosis of nutrition problems. You should always list down, these are the problems, nutrition, these are the nutrition problems of the patient, and this may be linked to particular findings. I'll come to that little later. Now, there is always a challenge or a difference when you are planning a diet in a hospital, in a center, and when you are having your personal clinic. There is a change in every angle. Anthropometric, in hospital you may not able to weigh that patient every time, because there are, ideally you should weigh, you should, if in your department the weighing scale and the sedometer is not there, please demand for it. And at every floor, if it is there, it becomes very easy for you. But in many, for various reasons, it may not be available. But when the patient is getting admitted, the doctors weigh that person, so you can take into account that weight also. But to know that weight, height, and everything is very important.
In centers you may be having fat scan machine. In your personal clinic also you can go for, fat scan machines. Blood work in hospitals, it is mostly hospital centers it is available, because when the patient is hospitalized, various tests are being done. So see to the my every detail you must see. You must see the laboratory findings also. If in your clinic you can, ask for a particular test to, you can ask the patient to do this test. Now clinical assessment also, in files, when you're in hospital there are different findings, clinical findings which are written. You can make your own findings, nutritional status. I think tomorrow you're going to study that in detail. Now the dietary assessment becomes, the style is little different. In hospital the intake, the obviously the patient is sick, so he may be able to answer your questions or not, but you can take the help of the relatives. See, analyze the patient's hospital diet, how is having, how is eating, whether he is able to have that much of food which is being given to him. See the leftover plates, if you can able to see. Then you can design the assessment protocols. This is how you can go. Nowadays, now there are a lot of tools which have come out. Everybody is having a mobile, so you can design your own tool for assessment, so that it becomes more easier. You save time. For centers also, you can develop the forms, uh, as per the requirement. If what is the center, it is a weight loss center, it is a diabetes center, it is a general center. Why the patient has come, whether he's come to as a health checkup, as your patient, as your center's patient, as your own patient. All these things, will help you to design his plan. So, because the time availability, you will be able to see how much time you are having, and then you can go to into the details thing. Sometimes the patient is not going to come to you, it is just a health checkup. So your diet should be like that, whether he should be able to do it for a longer time. In clinic you can develop, a 24-hour recall. You can take a 3-day recall, weekend and holiday recall, food frequency, because you can give that much of time. You can decide this is what, this much time I can give. In centers and hospitals it may not be always possible. So but, try to uh, make your own forms, or make your own protocols, where all the necessary things you're able to do it, you're able to take it. Time availability we have already discussed. Diet planning in hospitals, the type of diet is important. The tolerability, proteins की requirement है, liver में है तो आपको ज़्यादा देना है, या renal में है आपको कम देना है. But whether the patient is able to tolerate that food, उसकी appetite उतनी है, उसका increase, is there any other increased requirement because of his disease condition, whether is having any food tolerances. That all things you have to take into account. In center there are different types of patients, as the health checkup and all. Dietary requirements for each patient will be different. There will be a multiple medical problem. Patient, then you can, you can design your own patient education material, so you can give your nutrition advice in a more effective way. If you don't have much of time with you, you can just go for with the education material. You can just show, okay, this is what, this is it, this is it. But just don't sound like you're doing it for everybody. Each patient, you may be doing it for, a 20th time in a day, but that patient is coming to you for the first time. So keep that into your mind. uh, next lecture you're going to do it, patient counseling. But your body language and all is very very important. uh, the sustain in your personal diet, if, in your personal clinic, you can call. The patient is going to come to you as per whenever you're going to call. So you can make that much of, thing, you can make different type of, gradual caloric or caloric changes or protein changes. In centers and hospitals you have to see,
यू हैव टू बी बिकॉज ऐसा ना हो कुछ एक बार कम दे दिया कुछ ये हो गया, दैट इज ओके, बट साइड इफेक्ट वाली कुछ चीज आपको नहीं ये करनी चाहिए. सपोज यू हैव गिवन हिम सम सर्टेन सप्लीमेंट and that is going to be or a change you have just said, you have just given him a change because people ask for डिस्चार्ज डाइट या सेंटर में चलो मुझे एक वेट लॉस ये दे दो. तो दैट थिंग आपने एक वीक का 15 days का दिया बट ही इज गोइंग टू फॉलो इट दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो जब भी आप प्लान कर रहे हो तो सी टू इट दैट इट इज नॉट वेरी restrictive because then that is not a good thing, because it can, if he's following it for a long time, then he can have side effects from that. Whereas in personal clinic you can plan your appointments. Now supplement thing, this is a very important and you can be discussed separately, but these are the few things which you have to be take into account. Like whenever there is a hospital thing, when the intake is less than 50%, you can go for a supplement. You can write in the medical notes ki, always, whatever assessing, you're assessing the patient in a hospital, whatever thing you're doing it, calories, suppose if he is having only 800 calories through the day, write that in the file, 800 kilocalories per day, so advise this and this supplement. Always speak and write in the medical terms and the medical nutrition terms. So whenever you are explaining why you have done this, why you are not doing this, you have your answers ready. Micronutrient requirements are not this is like when you can prescribe. So when the micronutrient requirements are not met through the diet, then you can prescribe certain supplements. If the patient is having on a very low calorie diet and it is not, you're not able to give that much of micronutrient, then you can prescribe that. If he's not having that much of vegetables, then you can prescribe that. If it's having a particular medical problem and you want to prescribe a certain isabgol or certain other fiber supplement, you can go for that. Timing of the food availability is a problem, then you can go for that. Means evening time, is the time where you feel that जैसे 7 बजे की भूख, छोटी भूख, बट वो छोटी भूख में बहुत बड़े कैलोरीज जाते हैं. So to avoid that, if you want to prescribe a supplement, because patient, sometimes a client cannot carry that much of food which can stay for such a long time, then you can prescribe the supplement. When you're prescribing a supplement, you should see to it that it should not replace your complete food. Like in all thing, you don't have to give the supplement. The diet is also equally important. But when selecting a supplement, you have to check this point, see the ingredients, see the label, see the ingredients. It is on that a descending order. The first ingredient will be in more quantity and the last one will be in a very small quantity. Look for the nutrition facts, micronutrient percentage, the proteins, the sodium and potassium. See to it whether how much sodium it is having. Source of proteins is very important because many a times we have to give a protein supplement, or renal may we have to give a protein, a different kind of protein requirement. In if the patient is on dialysis, he has to have more proteins. If the patient is having a kidney failure and not on dialysis, there is a different proteins which you have to take. So see the source of proteins, whether it is a good quality protein. We just discussed about the dia scores and all, so see to it that it is into that a good quality of proteins. Calculate the macronutrients in the prescribed dose. Like always, if you're giving in 10 grams, if you're giving in 20 grams, 30 grams, so calculate the micronutrient, how much carbohydrate or how much proteins you're giving into that dose, 30 grams. Check the fiber content and the quality. Good fiber is always a welcome. Preservative, see whether the particular supplement is having any preservative, any added sugar, artificial sugars, what are the artificial sweeteners it has been added.
whether they are in the prescribed dose or whether they are in that recommended dose. All these factors are very important when you're selecting a supplement. Now these are some steps which you have to see whenever you're planning a diet. First, calculate the ideal body weight, calculate the energy requirement in terms of calories, then your protein, fat, calories from the carbohydrates. Make that diet prescription. Then if you know this much calories you're giving, distribute the exchanges, like right for the right all the exchanges, this much of exchanges, cereal exchanges, this much of pulses, this much of milk, vegetable, and other things. Then distribute that, Sorry to interrupt. like breakfast, lunch and dinner. Distribution like throughout the meals you can give. Then uh, design of menu, plan that menu according to the exchanges you have given. Give the list of foods allowed and avoided to the patient, and give the recommendation, like if there is certain if you want to give him like sodium, we talked about salt kitna dalna hai, yeah, if you're giving a particular type of food, yeah, Amita, kidney ka sorry to patient hai, interrupt. leaching karna hai, all that Amita, recommendation to give to the patient. Now Amita, this is the case. Yeah. can we wind up quickly? Yeah, I'll just take 1 minute. This is the last slide. Thank This you. is a case for you. Mr. Parvez Sukeshwala is a retired naval officer living in Ahmedabad. He is 167 centimeters, BMI 30. He has 2 eggs daily, hates green leafy vegetables, loves red meat, Gujarati food, bhajiyas and sweet. He's a moderate worker. He has a habit of drinking 3 pegs of alcohol daily. His waist hip ratio is 1:2. His triglyceride levels 350, HbA1c 6.1, and cholesterol is 300 milligrams per dl. So these are the nutritional findings which you can find out from this case. The patient is in the grade 2 obesity, as he's having a high BMI and waist hip ratio, borderline blood glucose levels linked to sweets intake. High cholesterol and triglyceride level may be linked to the excessive intake of sweets, bhajiyas, and empty calories from alcohol. So this is the nutrition findings which you have to write in your, it is better if you write in the in your file, or if you're having your own clinic, write down this, and or at least in your mind, so that the plan becomes what how you're going to plan your meals becomes easier for you. So a happy learning for all of you. Um if you have any doubt, and if you don't have time, you can just mail me or message me. I will answer that thing. This you can just take a photo, and you can plan a meal, whatever we just discuss, uh, from that guidelines you can plan a meal. Okay. And post this Thank in you, the Shruti. group also. Yeah. So, any doubts, students? If you have any doubts, you can stay or you can take a break for 5 minutes quickly. It's very well taught guidelines by Amita. Thanks a lot. It was very elaborately explained of every point. I think students are very much clear with each and every point of this. Thank you very much. Thank you. Yeah. Any doubts? Ma'am, Yeah, Ramza. ma'am, I want to ask a question. Meanwhile, ma'am just said that if we consume vitamin C in excess amount, then it would lead to some complication. But earlier, with what we have studied is that if we are consuming excess water soluble vitamin, then it is not a such matter of issue because it will excrete from our body through the urine and excretory materials Yes, वगैरह. you're right. But this is like it is getting excreted through urine, but then it puts a pressure on your kidney also. And this is like a very excess, which you cannot think, like patient is having 1,000 milligram ka vitamin C. So it becomes a very excessive amount.
So such a excessive amount is not good, because this is very relevant in today's times. Vitamin C and vitamin D, people are just blindly taking it. It is not required, because vitamin C can be very well planned through your diet. You know, you can there are lots many seasonal food which are available, and you can get your vitamin C easily from that diet. So there is no need. And this is like a very excessive, because vitamin C, lemon is given a lot of importance nowadays. And we are getting a case like a patient is having 4 lemons in a day, guava in a day, and plus he's having this vitamin C 1000, like more strength vitamin C. So such a excess level is not good, even if it is water soluble vitamins are excreted from your urine. Again, ma'am, I have a question about calcium. Generally, when I plan diet, I have seen that even I am consuming more calcium than recommend. क्योंकि हर अगर हम RDA बुक के साथ कंपेयर करते हैं, तो करीबन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे विटामिन ए, अगर हम 5 ग्राम भी कोरिएंडर लीव्स दे देते हैं, तो वो लगभग उसका पूरे दिन का जितना विटामिन ए होना चाहिए वो सब कैरोटीन या बीटा कैरोटीन वगैरह वो उससे मिल जाता है। तो फिर हम उसको दूसरी चीजें कैसे ऐड करें? ऐसे ही मेरे साथ कैल्शियम में बहुत बार होता है कि कैल्शियम जो मैंने अपनी जो डाइट मतलब जो मैं ले रही हूँ उसको मैंने कैलकुलेट करके देखा, तो मैं बहुत जो आरडी की रिकमेंडेड मतलब गाइडलाइंस है उससे मैं बहुत ज्यादा ले रही हूँ। तो एक बार मतलब मैंने टीचर से डिस्कस भी किया था इस बारे में कि ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आगे चल के, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इतना ज्यादा ले रही हूँ, तो ये मुझे आगे चल के कहीं स्टोन वगैरह किडनी में ना हो। तो उन्होंने भी उस वक्त ये बताया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना तुम ले रही हो वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो अगर वैसे मान के चले तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किसको हम सही चीज माने, क्योंकि हाँ, तो अभी जो पहले का ये था आरडीए, तो वो आरडीए में ये बायो अवेलेबिलिटी नहीं अकाउंट में ली गई थी। एंड नाउ अभी जो भी डेवलप हुए हैं गाइडलाइंस, उसमें ये बायो अवेलेबिलिटी अकाउंट में लिए गए हैं। सो अगर उतना आप अभी जो आपके ईएआर एंड आरडीए के बीच में वो जा रहा है, या आरडीए में आपका जा रहा है उतना, तो that is a good like you are having it in a safe amount. Okay, so the bioavailability is taken into account. So ye RDA, you can, this newer guidelines, you can take it. रमशा, इसमें जो हम अमाउंट supplement का जो कैलकुलेट एक है ना, करते हैं ना, हाँ रमशा, हम जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, हमने लिखा 30 ग्राम एक रोटी का, वो हमको बिल्कुल एक्चुअल जाना पड़ेगा, और एक्चुअल जाके और हमको उस एक रोटी में से कितना कैल्शियम मिलता है वो एस्टिमेट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है एक्चुअली बोल सकते हो कि हम आरडीए से ज्यादा लेते हैं। yeah, and you know नॉर्मली वी आर calcium, नॉट टेकिंग, नॉर्मली वी आर नॉट टेकिंग। yeah, calcium, the source of calcium is also important, you know, कि कहाँ से आप वो कैल्शियम ले रहे हैं, लाइक डेयरी से ले रहे हैं, या आपके हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा तो कैल्शियम या अदर न्यूट्रिएंट्स वो होंगे. सो दैट इज व्हाई द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप जो बायोलॉजिकली एक्टिव सोर्सेस में अगर आप लेते हो, तो वो आपको बहुत अच्छे प्रमाण में मिल रहा है, दैट यू कैन कंसिडर. बट अमिता, I just wanted to ask about protein. Yeah. I just saw today dietetics की जो बुक थी आइडिया मैनुअल, हाँ. उसमें नॉर्मल के लिए भी 1 ग्राम दिया. हाँ. एंड आप 0.8 बोल रहे हो. Yes. What is the correct वो? This is अभी 0.83 is for a healthy individual. This is a 2020 guideline. So you can go for that. But again, जैसे मैंने डिस्कस किया, द कॉम्बिनेशन, इट डजंट मीन कि आपको कम ये लेना है, आपको क्वालिटी अच्छी लेनी है. एंड इफ इन पर्टिकुलर केस अगर प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है, लाइक किडनी वगैरह, डायलिसिस का पेशेंट वगैरह है, तो यू कैन like you can change it according to the case. But for a healthy के लिए ही पूछ रही हूँ. Yeah, healthy के लिए ये 2 था, 0.83 and 1. Yeah, it is 0.83. Earlier it is 0.8 to 1.8.
0.2 तक था, and 2020 में it is 0.83. So we 83 have to only. So we consider, should use that only. yes, we have to use this only, Okay. 0.83. Yes. Thank you. Okay. Very nice presentation, Amita. Thank you, ma'am. So that homework is given. They can plan their diets. मैम वन लास्ट क्वेश्चन। Yes. आपने जिस तरीके से बताया कि गाइडलाइंस में विजिबल फैट का जिक्र था, पर हम जब कैलकुलेशन जब करते हैं तो फिर हर न्यूट्रिएंट का जो फैट का है, जो इनविजिबल भी है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, और Yes. ओवरऑल फिर हम उससे मतलब जो हमारा निकला विजिबल एंड इनविजिबल उसको मतलब मिला के फिर हम आरडीए के साथ कंपेयर करते हैं। Yes. See, जो आपको वैल्यूज दिए थे सेडेंटरी के वगैरह, जो भी 25-30, that was a visible fat, and जो टोटल अगर परसेंटेज आप देखोगे तो it becomes 20 to 30%. तो आप जब भी विजिबल फैट आप ले रहे हो, लाइक 50% या 40% यू आर गिविंग विजिबल फैट, तो बाकी का जो है वो इनविजिबल आप जितना भी दे रहे हो वो दोनों मिला के आपका 20 to 30% के बीच में जाना चाहिए. Girls, I think so you can now post your questions and we can start with the second session. Yes, yes. Shruti? Okay. Yeah, sure, ma'am. हाँ. Thank you. Thank you, Amita ma'am. Yeah. Now I request our second speaker, Dr. Sheetal Chaya, PhD RD, Associate Professor and Chief Dietitian, Dheeraj Hospital, SBKS Medical Institute and Research Center, Vadodara, Gujarat. Qualification PhD RD, work experience, served the subject on various posts and in different roles for more than 24 years. Chief Clinical Nutritionist and HOD of Clinical Nutrition and Dietetics, Dheeraj Hospital. Served as State Nutrition Consultant, Gandhinagar under NHM, Government of Gujarat. Participated as trainer in IYCF micronutrient supplementation program at various levels. EC member, Indian Dietetic Association Gujarat chapter. Member of editorial board, IDAGC newsletter. RD trainer and RD representative for Gujarat. Area of interest are applied nutrition, presented various scientific papers at national and international conference. Welcome, Sheetal ma'am. Over to you for the next session of dietary counseling. Thank you, Shruti. Counseling. You can share your screen now, ma'am. Is it visible? Yeah, ma'am. Shruti? Yeah, it's हाँ, और मेरी आवाज भी आ रही है ना? हाँ, yes. fine. Yes. तो पप्पू पास हो गया. Because every time I present from my office and my students and colleagues help me out. और आज मैं पहली बार खुद से कर रही हूँ, right? So this is a new learning. Teaching is a teaching learning. So I learn from my students as well. So it's a give and take. So, yes. Good afternoon, Sazia ma'am, Bhavna ma'am, Shruti, all LEC members present for the webinar, and dear students. So, my topic is practical approach to diet counseling or patient counseling, whatever it may be. Counseling. There is difference between consultation and counseling. The medicos or the doctors usually they do consultation. 2-2.5 मिनट लगते हैं उनके कंसल्टेशन में. When it comes to us, it is counseling. सबसे पहले हमारा ये टर्म हमें समझना जरूरी है. What is counseling? When I joined, way back in 1996, that was my first job in Apollo Hospital, right? So, Shruti, is it okay? I am not able to see myself. It's fine, ma'am. We can see you. हाँ,
ओके फाइन। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया था एज डाइटिशियन, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ऐसा था कि दे हैव ऑफर्ड मी द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ सैलरी हाइक। उन्होंने बोला, और मेरा डेजिग्नेशन हो गया डाइटिशियन एंड काउंसलर। सो उसमें ऐसा था कि देयर इज वन पर्सन besides that CAO and medical superintendent who knows everything about the hospital. वो मुझे रिवॉर्ड मिला, दैट इज आई रियलाइज नाउ ऑल्सो कि एक काउंसलर जिसको सब कुछ पता है हॉस्पिटल के बारे में था। खैर दैट वाज नॉट डाइट काउंसलर, दैट वाज अ काउंसलर। नाउ व्हेन इट कम्स टू डाइट काउंसलिंग, आई वुड से डाइट और न्यूट्रिशन काउंसलिंग, एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट जिसको अपने सब्जेक्ट के बारे में और अपने पेशेंट के बारे में सब कुछ पता है, then she can become a good counselor. So theoretically, nutrition counseling is an ongoing process in which a dietitian works with an individual to assess his or her dietary intake and identifies areas where change is needed. उनके साथ जो क्लाइंट है या पेशेंट है उनका असेसमेंट करते हैं, उनके डाइटरी इनटेक के बारे में, और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एरिया जहाँ पे हमें एज डाइटिशियन वर्क करना है। द डाइटिशियन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, सपोर्ट एंड फॉलो अप टू हेल्प द इंडिविजुअल मेक एंड मेंटेन द needed dietary changes. What are the basic principles of diet counseling? Evaluation of a patient's diet. अमिता मैम ने बहुत अच्छे से बताया आपको, कंटेंट काफी अच्छा था उनका, कैसे इवेलुएट करना है सारा और क्या बताना है। ओके, अब हम मेरा टर्न आया, उसमें यही है 3 डेट कॉलम कि अब बताना कैसे है, लेना कैसे है इंफॉर्मेशन। दैट इज द एसेंस ऑफ अ गुड काउंसलिंग। सो इवैल्यूएशन, suggestion to modify the meals, give reliable and practical options for alternate food. These are the basic principles and we'll see them in detail. For the aim of diet counseling is, why do we want to counsel the patient? हम क्यों बोलना चाहते हैं कि आप ये करो, वो करो, वो करो? पेशेंट या क्लाइंट हमारे पास आते हैं, कुछ तकलीफ है या कुछ तकलीफ ना हो इसके लिए आते हैं। तो अगर उनके कुछ तकलीफ है, उसमें पैरामीटर्स ऑल्टर होते हैं, ब्लड पिक्चर जो है डिफरेंट है, कोलेस्ट्रॉल हाई है किसी को अनीमिया है, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो द एम ऑफ डाइट काउंसलिंग इज to counsel in such a way so that the normal biochemistry level is maintained. हमें वैसा करना है कि अगर एनीमिक है पेशेंट तो उसका लेवल ठीक हो, एज फ्रॉम डाइट, मिनिमाइज द सिम्टम्स, जो तकलीफें हैं उनको, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स वो कम हो, प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, प्रिवेंट एन अनइंटेंशनल वेट लॉस, प्रिवेंट और करेक्ट वेट गेन। ठीक है, देन डाइटिशियंस, व्हाट आर द क्वालिटीज, हमारे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिनसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग स्किल्स हम डेवलप कर सके। सो नंबर 1 इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग। कॉन्फिडेंस तो भैया पढ़ने से ही आएगा, आपके सब्जेक्ट में आपको साइंटिफिक थरो नॉलेज है, दैट नॉलेज इज पावर डेफिनेटली। तो अभी मैंने सॉरी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, बाद में बात करूंगी। तो कॉन्फिडेंस तो आपको गेन करना पड़ेगा, एक तो पहले नॉलेज सब्जेक्ट का, और दूसरा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार आप करोगे, करते करते, जैसे अभी इंटर्नशिप में हमारे क्या होते हैं, बच्चों को, मैं स्टूडेंट्स को एक एक को ओपीडी पे बिठाती हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, एक पेशेंट मैं देख रही हूँ, बीच में बोलती हूँ चलो ले लो,
और आई जस्ट ऑब्जर्व द स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद उनको फिर बाद में उनको बताया धीरे धीरे कि सेम चार्ट अगर डायबिटिक के लिए वो कर रहे हैं, उसमें आई एड ऑन, ये मैडम ने आपको बता दिया है, अच्छे से बताया। अब एक दो चीजें और मैं ऐड ऑन करती हूँ, दैट नेक्स्ट टाइम माय स्टूडेंट she gives the instruction that I have told them in addition, ठीक है। that gives a confidence, धीरे धीरे बढ़ता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल, और उसके बाद वो लोग फिर जाके बताते हैं। एंड विद दिस so that confidence is very important, so that people rely on you कि yes ये मुझे बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे हैं। Okay, knowledge on up to date and accurate scientific information, as I said earlier, caring and competent compassionate attitude, कि आपको ये अंदर से आना चाहिए कि मेरे डाइट काउंसलिंग से इसको फर्क पड़ेगा और पड़ना चाहिए। यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू हैव दैट केयरिंग एटीट्यूड। विदाउट दैट मैकेनिकली काउंसलिंग कैन नॉट बी डन। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो ऐसे नहीं, ठीक है। यू हैव टू बी दैट केयरिंगनेस। देन ट्रस्टवर्दीनेस, आप मुझे बताओ, मैं ऐसा मतलब इतना कॉन्फिडेंस और इतना कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपके पेशेंट ने या क्लाइंट ने दिया है वो आपके पास रहेगा। ट्रस्टवर्दीनेस आपको रहना होगा, डेवलप करना होगा। ओके, एंड अबव ऑल अ डिजायर टू हेल्प। ओके, then other attributes include attention, to give our attention as fully as I can, as we can, right? So as आया उनका, हाँ भैया आपको बोल दिया ना, ये इसमें जो लिखा वो पढ़ लेना, हो गया। ये ऐसे नहीं, आपको पूरा अटेंशन देना है। you have to ensure that the whatever you are saying वो उनको लेके जाए, दे टेक द मैसेज एंड द चार्ट अलोंग विद, कि वो प्रॉपर वे में आपको पेशेंट को अटेंशन देना है। फोन पे बातें करते हुए फिर ऐसे कुछ बता रहे हैं बीच में, यू हैव टू गिव 100% अटेंशन टू द पेशेंट और क्लाइंट। जैसे मैं घर जाती हूँ शाम को 6 साढ़े 6 बजे, उसके बाद बात कर, हाँ बेटा मम्मा, बच्चों ने कुछ बोलना शुरू किया, बच्ची ने, हाँ 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 तुम सुन नहीं रहे हो मम्मा, आप सुन नहीं रहे हो, नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ। उनको पता चल जाता है, शी इज 13, उसको वो गुस्सा के चली गई। शी कैन टेल मी कि मुझे मालूम है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, बट द पेशेंट कांट, बट ही अंडरस्टैंड्स कि यस आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। फिर वो आपका चार्ट वो जाएगा, वो लेके चले जाएगा ऐसे ही, एंड ही विल नेवर फॉलो दैट। सो ये ध्यान रखना आपको कि प्रॉपर अटेंशन 1-to-1 आपको देना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले वेरी वेरी मच बिग रोल। द वॉइस, द क्वालिटी, द पिच ऑफ योर वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस, आप कैसे लगते हो। मुझे आई एम बेसिकली अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है पब्लिक के बीच में, कम्युनिटी में रोल करना। तो मैं मोस्टली आपने देखा होगा, और ऐसे भी आई प्रेफर टू वेयर साड़ी और सूट और ऐसा, जो कि हमारे ऑफिस में परमिटेड है, वेस्टर्न आउटफिट एंड ऑल। बट अपीयरेंस में मैं ऐसा सोचती हूँ कि लोग मेरे से, मैं जिस कम्युनिटी में, जिस जगह पे मैं काम करती हूँ, जहाँ जैसे जिस कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, तो उन पे मेरा अपीयरेंस बहुत मैटर करता है कि दे गेट कनेक्टेड, they open up seeing me कि हाँ ये આ બેન સાથે તો વાત કરી શકાય, તો બહુ મસ્ત સમજાયું, હું પછી ફરી આવીશ. So that appearance play a big role. So you have to be particular about that कि किस जगह आपको कैसा लगना है, क्या appearance है. Not only the dressing and all, but overall. ऐसा एक बार एक रैपो बन गया, फिर आप कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, that doesn't matter much.
बट एक रैपो बनाने के पहले आपको ये फर्स्ट ध्यान रखना है। देन पोस्चर, कैसे बैठे हैं, हाँ बोलो चलो, प्रॉपर पोस्चर आपका, जिस हिसाब से आप उनको डील कर रहे हो, दैट मैटर। एंड जेस्चर्स, वो अपना हिस्ट्री बता रहे हैं, उसके आपको पिछली बार भी तो बताया था, या आपने नहीं भी बोला, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बोल रही हूँ, that then they will not reveal the things, ठीक है। जेस्चर्स बहुत बहुत बैलेंस, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। देन इंडिविजुअलाइज्ड, nutritionally balanced approach, educating the patient regarding nature of disease, benefits and importance of following the diet, ये सारा आपको इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज बोले तो मतलब क्या एक एक पेशेंट के लिए एक एक लिखें चार्ट? मेरी प्रैक्टिस में मैं क्या करती हूँ, हमारे यहाँ क्या करते हैं, काफी सारे पेशेंट्स आते, डाइट चार्ट्स, डायबिटीज के, हाइपरटेंशन, बहुत सारे बन के रखे हुए हैं, और हर बार अलग अलग बैच ऑफ इंटर्न्स आते हैं, तो उनको इम्प्रोवाइज करते हैं, मैम हमने यहाँ लिखा, ठीक है आप बनाओ। हर पेशेंट, हर इंटर्न को अलग अलग चार्ट बनाने भी मिलता है, और उसके बाद फिर उनकी कॉपी होती है और हम देते हैं। बट no single patient is given the same chart without any pen mark by the dietitian. That is my instruction to the dietitian team, dietetics team. क्या है, आप foods to be avoided and included, वो है एक स्टैंडर्ड है। आप उनसे जो डाइट हिस्ट्री लेते हो, उनका जो पैटर्न है, जैसे हमारे यहाँ आते हैं एमपी के बहुत सारे पेशेंट, वो 2 बार खाते हैं, 2 ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह और शाम। उसके बाद फिर दूसरी बार आया, फिर उनका जो हमने चेंजेस किए, उनको हम बताते हैं आपके यहाँ 2 बार खाते तो 2 मेजर लंच या डिनर ऐसा किया, तो उसमें थोड़ा इंक्लूड करते हैं। तो जो हमारे पास जो सैंपल मेन्यू है उसमें एडिट करके फिर हम उनको देते हैं कि ये दूसरों के लिए, आपके लिए ऐसा। सो दैट वे इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। आप उनका फूड हैबिट्स, उनका बैकग्राउंड, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से द सेम चार्ट ऑप्शन देते हैं ना उसमें, तो strike out the option that is not applicable for the patient. That will give a personal touch and it will be individualized. So, Ninama Nidali, admit. Steps of counseling, raising awareness. आपको जो भी आपकी स्पेशलिटी है या फिर जहां भी आप जा रहे हैं, जैसे कि डूज एंड डोंट्स हम बताते हैं कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, दैट दिस इज वन स्टेप कि हाँ, टू क्रिएट अवेयरनेस। और हर पेशेंट में या इंडिविजुअल काउंसलिंग या ग्रुप काउंसलिंग में, दैट इज वन स्टेप, वन इम्पॉर्टेंट point of counseling to give them correct updated information about the scientific knowledge about nutrition you are having, right? Addressing concern कि हम उनका कंसर्न होता है कि हम कैसे लें, अगर आगे कैसे बढ़े, इससे ये तो नहीं होगा, वो, that we have to address, that we have to be ready that their concerns are likely to come and we have to address that. And providing dietary guidelines, as you have said, listen in the earlier session also, correcting misinformation. अभी जैसे किसने पूछा कि अरे विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो फिर उसको तो हम वो एक्सक्रीट आउट हो जाता, तो वो लेने में क्या है। देखो हमारे एक्सपर्ट अमिता ने क्या बताया, जो इंफॉर्मेशन थी मिस इन्फॉर्मेशन, उसको करेक्ट किया, दैट इज द रोल ऑफ द डाइटिशियन। देन एनकरेजिंग क्लाइंट, बहुत किया मैं नहीं, आप कर सकते, you firmly you believe that if I am telling it is going to happen,
कुछ ना कुछ उसमें होगा जिसमें मुझे और वर्कआउट करना है, हो जाएगा. So that encouragement should be there from your side. Then substituting positive behavior for unhealthy ones. Okay, इसमें मैं just a minute. जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी डाइट हिस्ट्री एंड हैबिट हमने पूछा, addictions and all. So if somebody is having habit of tobacco chewing या गुटखा और वो सब मावा मुंह में रखते हैं, राइट, तो उनको तो डिस्करेज करना ही है. दैट बिकम्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो. उसमें फिर क्या करती हूँ मैं कि आप धीरे धीरे छोड़िए, हो जाएगा. 21 डेज बोलते हैं हम लोग कि 21 डेज तक एक हैबिट आप करो, एक अच्छी आदत आप लोगे तो फिर आपकी बुरी वाली उसके ऊपर वो चली जाएगी. तो अगर वो उसमें मैं क्या बोलती हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप मुंह में कुछ रखने की आदत है तो कोई अच्छी चीज रखो ना. वो मावा की जगह फिर हम उनको आंवले की सुपारी वो रखने का बोलते हैं. तो उससे क्या होगा, उसकी अच्छी चीजें भी बताते हैं कि उसमें विटामिन सी, आपका जो डैमेज हो गया, आपका उसमें जो नुकसान हुआ है मुंह के अंदर, वो भी धीरे धीरे भर जाएगा और आपको मुंह में कुछ रखने का जो क्रेविंग होता है, जो इच्छा होती है, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी. एंड इट वर्क्स. Then identifying barriers that we'll see later also कि मैं करना चाहता हूँ पर क्या चीजें हैं, या फिर you have to identify the things that, जैसे हमने बोला कि अब आइडेंटिफाइंग बैरियर्स एंड एनकरेजमेंट एक साथ आएगा. जैसे कोई वेट लॉस के लिए एक पेशेंट आया, अब उसको हमने कहा चने खाइए, ये खाइए, बीच बीच में स्प्राउट्स. फिर ऐसे क्या हुआ, तो मैं तो बाहर खाता हूँ, वहां पर पॉसिबल नहीं है, वो तो घर जाऊंगा तब करूंगा. तो ये तो भाई आप घर 2 साल के बाद डिग्री पूरा करके जाओगे तो 25 किलो और वेट बढ़ जाएगा. तो ये बैरियर हुआ कि भाई कैसे करें. अब उसमें हम ये नहीं बोल सकते, ये मैं बोलती हूँ कि भाई खुद से करो. आप रूम में रहते हो, पानी तो होगा, आप बाजार से चने लेके आओ, उनको सोक करो. इतना नहीं कर सकते. स्प्राउट्स बनाने में क्या है, रुमाल में बांध दिया, दूसरे दिन धो के वापस उसमें प्याज टमाटर नींबू. खुद से करो, थोड़ा हिलो, फिर से हो जाएगा. मतलब सॉरी, दिस इज नॉट द टॉपिक. मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द barriers and then you have to encourage to overcome the barriers. Okay, so that is one important factor of counseling. Then what makes counseling effective? Optimal counseling contributes to a successful health and nutrition outcomes. So ideally counseling should be done in a place where the client feels comfortable and has privacy. This may be more challenging in a busy health facility like us than in a community setting, but adjustment can be made to improve the situation. Suppose मैं एक टीम के साथ बैठी हूँ, 4-5 डाइटिशियंस हैं या फिर मेरे फेलो कलीग्स कोई लोग, वहां पर पेशेंट आया. What happens usually कि कई बार एक साथ पेशेंट ने बात करना शुरू किया, दूसरे लोग भी उसमें एड ऑन कर रहे हैं. मे बी ही डजंट लाइक टू बी इंटरप्टेड बाय एनी अदर person. You have to be very cautious और calm and cool environment में separately you have to address the client. तो हमारे यहाँ तो ट्यूनिंग हो गई है, जैसे पेशेंट आता है, अगर मैं ले रही हूँ तो एक के अलावा बाकी चले जाते हैं, और एल्स we go to separate section and 1-to-1 काउंसलिंग वी डू. मेरे स्टूडेंट्स जिनको अगर हमने दिया है पेशेंट जिनको उनके बात करें, तो यूजुअली दे जब पेशेंट आते हैं तो वो कंसल्ट करते हैं फिजिशियन से, मान लो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हैं. इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आने तक में वो उनको वेट करना पड़ता है. तो हमारे बच्चे उनको गार्डन में लेके चले जाते हैं, वहां पर बैठ के उनके साथ बातें करते हैं और बहुत अच्छे से वो ओपन अप होते हैं. साथ में उनकी फैमिली
है तो वो ऐड ऑन करेंगे कि हाँ हाँ ये खाना है, तो दैट इज हाउ वी डू इट. सो in your practice you have to think that you make the client comfortable so that uh, he opens up. The next point is the foundation of effective counseling is asking questions about the client's symptoms and situation to be able to give appropriate information and support the client to make healthy choices at home. आपको क्वेश्चंस पूछना है, इस ढंग से पूछना है कि आप एक थोड़ा पूछा और उसने पूरा बोला. ये नहीं कि हर समय बस FFQ लेके बैठे हैं या क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा बनाया, टिक 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 ये करते हैं, नहीं करते. दैट आई डोंट अग्री टू इट. आप इस आगे हम जाएंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज हाउ टू टेक इंफॉर्मेशन. मतलब अभी हमारे यहाँ जो इंटर्न्स है वो कभी कभी भी वो लेके नहीं जाते हैं पेपर पेन लेके उस हिसाब से. दे हैव टू they are instructed to go and talk to the patient in the odd hours, जब बाकी सबका राउंड ऑन हो गया, जब वो केस स्टडी भी लेनी है उनको तो वो जाके बातें करेंगे, खाना खा लिया ये क्या, उसके बाद कि आज क्या खाया, कल क्या, अच्छा और कैसे है, और घर पे कौन, ये कौन है, कोई विजिटर्स उनके आए, उनसे बातें करते करते और इनडायरेक्टली वो उनके साथ मिक्स होके सारा इंफॉर्मेशन उनको लेते हैं rather than just taking the format and asking questions. Just telling people what to do does not mean that they will do it, as mere knowledge is not enough to change the behavior. You have to have certain attributes that you need to develop, and you can check. You might be counseling many clients and patients और एक दूसरे से बातें करते हो, बस मेरा जो है ये, इसमें बस चेक कर लो कि आपका कहीं कुछ बाकी है तो you can develop the things. Counselors need to know not only what messages are appropriate but also how to prioritize these messages depending on client's need and how to deliver them effectively in a short time. बहुत सारा नॉलेज है और बहुत सारा बताना है, बहुत सारा बताना चाहते भी हैं, लेकिन आपको कट शॉर्ट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 to 4 मैसेजेस ही एट अ टाइम देना होगा, तभी वो उसमें से चांसेस हैं कि वो उनको फॉलो करे. अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. यू कैन आस्क. सो नाउ विल सी different strategies for nutrition counseling one by one. One is active listening, a strategy of communication that involves all of the senses and is the cornerstone for a problem-solving counseling relationship. Most important counseling strategy guides effective problem solving, includes empathy and concrete responses. Okay? This is active listening. To make it more पक्का, आप लोगों को समझ में आएगा. IYCF बताया ना, my specialty infant and young child feeding, right? उसमें एक चीज आती है एक्टिव फीडिंग. मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ मदर्स को कि आपको एक्टिव फीडिंग करनी, मतलब स्टूडेंट्स को बताती हूँ एनकरेज एक्टिव फीडिंग. व्हाट इज एक्टिव फीडिंग? एक्टिव फीडिंग जब मदर बच्चे को फीड कर रही है, 6 मंथ से कम का बच्चा है, उसको अपना, जब बच्चा मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है, उस समय बोलते हैं एक्टिव फीडिंग. एक्टिव फीडिंग मीन्स टू टॉक टू द बेबी व्हाइल फीडिंग हर. बच्चा समझ रहा है नहीं, उसमें क्या है, मदर क्या करती है, यूजुअली काम करते हैं, उसके बाद बीच में बच्चा रोया, दौड़ के आए, उसको फीड दे रहे हैं और
ध्यान उधर रखा कि सब्जी रखी हुई है या फिर जो खेत में काम कर रहे हैं तो वहां जाना है, अभी काम के बीच में से आए हैं, नो वे। आपको एक्टिव फीडिंग मतलब आपको जब आप वो मदर फीड कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा बच्चा। नाउ कम टू एक्टिव लिसनिंग। जब आप पेशेंट के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो, आपको एक्टिव लिसनिंग डेवलप करनी पड़ेगी। वो ध्यान उधर जाना, अभी ये है वो है ये है, नहीं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइड पे, मैं और मेरा पेशेंट, राइट। अब ये चारों पॉइंट्स पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिव लिसनिंग, not simply hearing words. It requires hard work, requiring focused attention and concentration. Essential components of effective listening is openness, concentration, and comprehension. Openness, as I said, yes, हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, कुछ नहीं होगा, आप बोलो, ठीक है। कंसंट्रेशन, मेरा पूरा ध्यान आपके ऊपर है। देन कॉम्प्रिहेंशन, कि आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे। पहले क्या बोला था, क्या क्या मतलब दैट आई टोल्ड ना, कि पेशेंट के पास जाके उनसे बातें करते हैं, उनके सुनते हैं, उसके बाद दे कैन कॉम्प्रिहेंड। आके बोलते मैडम वो जो पेशेंट था ना मेल मेडिसिन वाला, उसके वो गई थी उसके पास, उसने ब्ला 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 ब्ला, बच्चे सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट शुड गो। How to do active listening? Undivided attention to the client. This is just the repetition. Listen for verbal messages. Observe non-verbal behavior. जो हमारा देख रहे थे non-verbal, अभी आपको भी वो सब चीजें ऑब्जर्व करनी है। आई कॉन्टैक्ट, attentive body language, vocal style, and verbal following. Paraphrasing, as I said, summarizing. Briefly restate the essence of what the person has said concisely using different words. ये फॉर एग्जाम्पल एमपी से आए आप लोग, आपके यहाँ तो 2 बार खाना खाते हैं, 2 ही बार खाते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम तो 2 ही बार खाते हैं। अच्छा, फिर भूख नहीं लगती? नहीं नहीं, अभी तो आदत ही हो गई है, बीच में तो सीधे शाम को फिर खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय पीते हैं? हाँ, चाय तो एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद फिर और कुछ कुछ पूछे, फिर लास्ट में, हाँ तो आप सुबह उठ के पहले एक चाय लेते हैं बड़ी, उसके बाद आपने 9 बजे तो खाना खा लिया, रोटी और दाल, और उसके बाद आप 8 से 10 कप चाय पीते हैं, फिर डिनर करते हैं। दैट इज पैराफ्रेजिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उसके बीच में नहीं, ऐसा हर दिन नहीं होती है, कभी ऐसा कुछ मिला तो खा लिए बचे वाले। so, वो उनकी बात है, हमने समझ लिया कि उनका लाइफ फूड पैटर्न क्या है, राइट। That is paraphrasing. Reflective listening. Listen to not only the words but also the feelings associated with the message. It is a way of communicating your understanding, phrased as a statement rather than a question. उसके क्या steps हैं? Correctly identifying the feeling being expressed. Reflect the feeling you have identified to the client. Match the intensity of your response to the level of feeling expressed by the client, and respond to the feelings of your clients, not the feeling of others. हमारे पास हम वार्ड में गए या फिर ओपीडी में पेशेंट आया, रिलेटिव भी साथ में आए, आप पिछली बार आपको बताया था वैसे ही कर रहे हैं ना आप? आपका तो ये शुगर इतना है, पिछली बार से बहुत अच्छा है रिपोर्ट, पहले बताए मैडम ये कुछ नहीं करता, वो है ना, ये है वो है, वो शुरू हो जाते हैं रिलेटिव। फिर उसने नहीं 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 मैडम, एक ही बार मैं गया था ना उसमें, आपको ये कंक्लूड, you should be smart enough to conclude, yes, बीच में वो पेशेंट फॉलो कर रहा था, रिलेटिव ने उसको बीच एक किसी फंक्शन में जाने मना किया होगा या खाने मना किया होगा, पर उसने किया, उसके पीछे वो उसने लोग उसका मजाक बना रहे हैं, उसको बोल रहे हैं he is not following the diet, but you have to
listen to the patient. Patient usually they don't lie, and you, even if he or she is lying, जो मेरा पेशेंट बोला मुझे वही सुनना है। समझना तो अपने हिसाब से आपको उनके पीछे की फीलिंग्स की, वो he will be caught, he doesn't want to let down in front of you, कि बोला था कि मैं पूरा फॉलो करूंगा, फिर एक बार ऐसे हो गया तो आपके सामने वो खराब नहीं दिखना चाहता, इसलिए ऐसा बोला। You have to understand that feeling. That is reflective listening. Then clarifying, प्रोबिंग एंड प्रॉम्प्टिंग, आपको हिस्ट्री लेने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसकी फूड हैबिट्स और बाकी चीजें जानने के लिए प्रोब करना होता है। टेलिंग वर्ड्स, अच्छा ठीक है आप फ्रूट्स नहीं खाते, बिल्कुल अभी लास्ट कब खाया था आपने? कल केला खाया था, अच्छा ठीक है, और एप्पल नहीं पसंद, मतलब इस हिसाब से आपको ट्रेलिंग फ्रूट्स जो ऑलरेडी हम लोग करते हैं, जो जैसे फूड एक्सचेंजेस हम बात करते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो, दैट इज प्रोबिंग एंड प्रॉम्प्टिंग टू नो अबाउट द हैबिट्स एंड information about the patient. Ask clarifying questions. Confrontation or challenges, to bring to the front or to discuss problems, concern and issues that may be barriers to a healthy nutrition lifestyle, and note the discrepancies. जैसे मैंने बोला ना, वो जो पेशेंट है जो बाहर रहता है, या फिर हमारे स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक स्टडी की to assess the dietary habits of फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स, उसमें सबका ऐसे ही है कि पहले कुछ नहीं था, अभी हॉस्टल में आए हैं तो फिर ये अलग है, यहाँ तो जो मिलेगा वही खाना है, तो वो बैरियर्स हैं, वो इश्यूज। खैर हम, मेरे पास उसका सोल्यूशन भी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ स्टूडेंट मेस कमेटी। तो मैं उसके सामने मैंने ऑप्शन रखा कि आपको अगर इसकी जगह हेल्दी ऑप्शन दे तो आप खाएंगे क्या, जो तला हुआ या फिर ऐसे चीजें मिलती हैं स्नैक्स में। बिकॉज अर्लियर द स्टूडेंट्स यूज्ड टू से कि अरे वहाँ शाम को नाश्ता तो थोड़ा सा लाइट ऐसा होना चाहिए ना, हेवी, जो कि हम लेके खाते हुए चले गए। और अभी इस बैच में बच्चे उन्होंने कहा कि हमें ऐसा मिलता है तो हमें वो नहीं चाहिए। And these are the challenges. We want to adopt a healthy lifestyle, and because I'll share one incident or the changes that has occurred in new batch of medical, कि इस बार उनका क्या हुआ कि लास्ट ईयर से ही इनफैक्ट कि 1 month, full month of foundation course, that is apart from medical education, other specialities are taking classes, that is something called मतलब education plus, उसमें मैंने उनका 3 घंटे का सेशन लिया था स्टूडेंट्स का। so that these challenges came by the students during that session. So now we are working on it, but let's not, I should not deviate from this thing, because this is a unidirectional teaching. I am not able to get question from you अभी। तो ठीक है, मतलब confrontation to bring to the front, कहाँ हमने adolescent nutrition पे बात की थी, और उसके बाद उसमें वो challenges बहुत अच्छे से सामने आ गए। तो वो आपको उनके पीछे जो क्लाइंट के पीछे या पेशेंट के पीछे जो रीजंस हैं that which are enabling या stopping them to follow a particular diet regime, that should be addressed, and note the discrepancies. Affirming, the dietitian tells the client that she understands and she is there to support at difficult time. That happens mostly in क्रिटिकल पेशेंट जिनका बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जैसे रीनल पेशेंट हैं, जिनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस समय ये अलाइनमेंट मैटर करता है कि आपको उनके
थॉट्स पे अंडरस्टैंड करके और उसके हिसाब से आपको समझाना है कि मैं समझ रही हूँ, राइट? नहीं अभी तो ऐसा ही है, बस यही करना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी दैट rigid. You have to be understanding. In normalization, the dietitian tells the patient that it is perfectly normal to have these feelings or reaction. And जैसे लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने के बाद या फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद whatever the feeling of the patient, that you have to endorse. Yeah, it happens, but you will, if these are negative feelings, well, certainly you have to tell that time लगेगा पर हो जाएगा धीरे धीरे आपको. It is perfectly normal to have these feelings or reactions. Then for advice, provide possible solution to problem. कोई एक ही नहीं बस ऐसा ही करना पड़े. You have to give different alternative that we do. Should be given in non-judgmental manner. Identify the problem. Explain the need to change. आप ये change करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा. मैं usually जो ले पर्सन होते हैं जैसे उनको आप अगर ये जो मैंने समझा नहीं मैंने नहीं कट कर दो नहीं ये अगर आप इस तरह का थोड़ा सा चेंज करेंगे अपना खाना पीना तो आप पे दवा का असर अच्छे से होगा. दूसरा आपको दवा का डोज भी कम हो सकता है और आपको उसके बाद इन चीजों की आदत हो जाएगी. आपको ये इसके हिसाब से आपको आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी और दैट इज फॉर बेटर कंप्लायंस दैट वी नीड टू explain why this change is required, right? Advocate the sorry side hello, any problem? Nothing, ma'am. Any question? No, nothing, ma'am. I think someone have unmuted his mic. Am I exceeding time? Sorry. No, you can carry on. Advocate and explicit plan of action कि मैं क्या बताने जा रही हूँ. अभी हम इस बार ऐसा करते हैं फिर आगे देखते हैं. नेक्स्ट टाइम आप आना तो अपनी डायरी लेके आना तो मैं देखूंगी. मैं क्या करती हूँ ये यूजुअली दिस इज माय प्रैक्टिस कि उनको कुछ प्लान दिया, सैंपल मेन्यू दिया, व्हाटएवर. उसके बाद अब आप आई एंश्योर कि अभी आपको इस तरह से आप करने की कोशिश करिए. फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे 1 महीने के बाद जब भी आपको डॉक्टर ने बुलाया तो आप 4-5 दिन का अपना तब तक तो पूरा चेंज हो जाएगा. आप मुझे विश्वास है कि आप चेंज कर लेंगे तब तक. तो एक रूटीन फ्रेम हो जाएगा. तो वो 4-5 दिन का आप लेके आएंगे और उस दिन हर दिन आप लिखो कि अभी आज कैसा हुआ. जैसे सपोज एक पेशेंट था गैस्ट्राइटिस जीआरडी का पेशेंट, उसको बहुत बर्निंग होती थी. क्या होता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स वापस आते हैं, रिगर्जिटेशन होता था. तो उसको मैंने ऐसा प्लान दिया जब तो उसके बाद जब कि हर दिन आप लिखना आपने क्या क्या खाया सुबह से शाम तक और लिखना कि आज कुछ हुआ क्या, आज कैसा लग रहा है. ज्यादा आप ध्यान दो कि अच्छा लग रहा है. बिल्कुल मतलब बिकॉज दैट इज वन रीअश्योरेंस एंड ऑल कि अब हमने अच्छे से डाइट प्लान किया है ना, कुछ नहीं होगा आपको अच्छा होगा. पर जिस दिन कुछ होता है तो वो भी साथ में लिखने का. देन वी कैन कोरिलेट कि आपके फूड इनटेक में ऐसी कौन सी चीजें दैट माइट बी द कॉजिटिंग फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन, राइट? सो ये सब चीजें हम we are supposed to explain to the patient. And open-ended question to elicit a response from the client. Open-ended questions which do not have their answers in yes or no. जैसे हम आगे जाएंगे अभी दूसरे क्वेश्चन है स्लाइड में. Then directing, telling a client exactly what needs to be done. Often part of educational component of session कि अभी आपको ये करना है, ये करना और ये करना, बस this is the this thing. उसके अलावा बाकी आप ठीक है 2 to 3 then important messages we have to direct.
When giving directives, be clear and concise. Determine if instructions were completely understood. Have them repeat back instructions. आप बताओ, पूरा समझा दिया, अब आप बताओ, 3 चीजें बताओ, मैंने क्या क्या बताया. That is how I do it. Allowing silence, हो गया पहले, repetition. Silence is a valuable tool. Clients need space for internal reflection and analysis. After given response to an evaluation, during instruction of complex dietary regimen, and after emotional outbursts. That is why I kept this, like, due to demands of coping with newly diagnosed illness. एक बच्चा recently detect वो diabetic ketoacidosis में आया था DKF में, and उनके parents, usually it happens with type 1 diabetic, and ऐसे भी कोई भी suddenly ESRD और ऐसा डायग्नोस हुआ और उसके बाद उनको फिर डाइट प्लान हम समझाने गए हैं, तो इट हैपेंस दैट दे बर्स्ट आउट कि मतलब इतना सारा परहेज, इससे तो हम मर ही जाते. शांति से एम्पैथाइज करना है. फिर उसके बाद इनमें से आपको उनको समझाना होता है, हो जाएगा. काफी सारी चीजें हैं. मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ. एक मेरे फर्स्ट जॉब में अपोलो रांची, एक आरिफ अहमद करके एक बच्चा था, who was 12 years old, और उसको कार्डियक प्रॉब्लम थी. उसको वो पूरी जिंदगी उसको नमक बिल्कुल नहीं खाना. He could not tolerate even a single pinch of salt. ठीक है. अभी मैं जिस भी पेशेंट को, जैसे छोटे बच्चों को जब नो शुगर करके काउंसलिंग करते हैं, तो मेरा एक ये मैं हमेशा याद करती हूँ उनको समझाने में कि ये तो शुगर है, मीठा नहीं खाए, बहुत सारी चीजें हैं खाने को. आप सोचो एक बच्चा ऐसा जिसको जिंदगी भर नमक नहीं खाना, तो इट वर्क्स. कुछ अच्छे एग्जाम्पल रोल, ये किसी भी तरह से आपको उन पे एम्पैथाइज करके, एंड यू हैव टू go ahead. Break silence by repeating last sentence or phrase spoken to client. है ना. आपके बोलते बोलते में अचानक ये खाओ, ये, जैसे एक माता जी आई थी, वो डायबिटिक क्लिनिक में आती थी. मेरे ऑफिस, मेरे रूम में ही वो कंपनी वाले आते थे, और वो डायबिटिक कैंप होता था अभी दूसरे ये फ्राइडे को, और उसके बाद उनकी डाइट काउंसलिंग साथ में होती थी. तो उनको मैंने ऐसे ही बोला कि आप ये लीजिए, वो लीजिए. बोले खाना कौन बनाता है? ये दैट इज अ यूजुअल क्वेश्चन आई आस्क कि जमन कौन बनावे. क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं फिर वो बोलती हूँ जो खाना बनाता है उसको लेके आना. तो मैं उसको काफी कुछ रेसिपीज बताऊं, कुछ बताऊं कि उनके खाने में ये करना वो करना. दैट इज माय यूजुअल थिंग है. तो उन्होंने बस वो रोने लगी कि मतलब उनके बच्चों ने उनको हटा दी. वो अकेली थी, हस्बैंड और वाइफ वो खुद ही बनाती थी, एंड शी वाज नॉट इन गुड शेप. इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी टू. फिर से उसको, बट यू हैव टू बी अ लिटिल डिटैच्ड. एम्पैथी है, सब है, बट यू हैव टू, एक पर्सन रो रहा है, उसके साथ में आप भी रोने लगोगे, तो आप उसको सपोर्ट कैसे करोगे? दैट इज नॉट द सपोर्ट. यू हैव टू बी फर्म, एंड देन आफ्टर यू कैन गो अहेड विथ योर सेशन. ठीक है. और डुएबल चीजें जो सब हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, आप एक बार बनाओ. बासी खाना, अगर ठंडा खाना हम डिस्करेज करते हैं कि नहीं रखा हुआ नहीं खाना, फ्रिज में काट के रखा हुआ नहीं देना, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते, खत्म नहीं होते. पेट तो भरेगा ना. ठीक है, आप जब आपको रात में बनाते कट करते हो तो आप रख दिया करो, फिर बनाओ, या बनाया हुआ सब्जी दोबारा खा लो अच्छे से. हम फूड प्रिजर्वेशन भी तो जानते हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते आप वो अच्छे से रखो और फिर खा लेना. तो दैट वर्क्स कि आप
अगर एक बार बनाया और पूरे दिन खाना है तो कैसे करें, उसके हिसाब से हम बता देंगे, कुछ और चीजें इंक्लूड कर देंगे। अगर आपके पास खाना बनाने के लिए कोई और नहीं, that these things that is again beyond this topic. Go ahead. Self-referent, self-disclosing and self-involvement increase openness, build trust, provide model to increase client. Level of disclosure create more personal atmosphere. Again and again that thing is coming. Be careful of amount and stage of introduction. मतलब एक ही बार में बहुत सारे changes नहीं करना है. That you should keep in your mind. Nutrition care plan. After discussing the result of client's nutrition assessment and agreeing on 1 or 2 achievable goals to improve his or her nutritional status, dietitian should help the client to make a nutrition care plan to achieve the goals, considering challenges the client might face. Okay, तो उनका assessment हो गया, उसके बाद ये करते हैं. That is actually counseling meaning. This can be kept in the client's file or given to the client to take back to the health facility on follow-up visits. Okay, usually जो diet assessment sheet होती है उसी में next में हम we used to do this type of care plan, and this is a sample care plan that very simple and one can do, or there are many, and these are some helpful tips for the effective diet counseling, what we discussed earlier है ना. हो गया. Do more listening than talking. आप बताइए, आप ही खाते हैं, मैं ये बोलती हूँ, आप बताएंगे सुबह से शाम तक खाने में आपका क्या रूटीन है, या और अपनी सारी एक्टिविटीज के साथ खाने का भी बताइए. उसके बाद शुरू हो जाते, बीच बीच में प्रोब करते. हाँ ठीक है. कुछ नहीं, मैं तो दाल भात से क्या खाते हैं. कई बार भाई जैसे मैंने बोला ना, बाजू में स्टूडेंट है, वो बोलेगी काका आप क्या खाते हैं, તમે શું ખાઓ છો, उसमें आंसर बस दाल भात शाक रोटली. बंद. आप मुझे बताएंगे आपको सुबह से शाम तक, दैट इज द वे, और एल्स अपने खाने के बारे में पूरा रूटीन बताएं. उसके बाद उसमें बीच में आपको एक्टिव लिसनिंग वो ध्यान रखना. Then ask open and neutral questions like, tell me more, what does that make you feel, tell me about your eating habits, what have you been doing to lower. आपका कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, कम, आपको तो कोलेस्ट्रॉल काफी सालों से है, हाँ, आपने कुछ किया उसके लिए, आप कुछ खाते हैं अलग से, बहुत बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. मुझे तो आप लोगों से सीखना है, हर जगह अलग अलग चीजें लेते हैं. हाँ हाँ, मैं जामुन इतने अच्छे से बताएंगे, वो जामुन की गुठली, चार, और उसमें मेथी दाना, और इसमें और 2-3 चीजें वो बताएंगे. आपको पता चलेगा वो चीजें जो कि आप कम्युनिटी में प्रिवेलिंग है, जो फॉर you find most of the time they do have that effect that the patient is claiming. Tell me what time do you rise in the morning, what you have to eat, take me through your day. That is my way. सुबह से शाम तक पता है, फिर मैं चुप रहती हूँ. अदरवाइज ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगी, दूसरे पूछती थी तो उनसे ज्यादा फिर मैं बोलने लगती थी. अभी धीरे 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 सुनने लगी. अभी भी देखो दूसरी जगह चली जाती हूँ. बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ज्यादा सुनना है, राइट. क्लोज क्वेश्चन, डू यू स्मोक, ये भी जरूरी है. Do you salt your food at the table? But close questions should be very less and specific only. Leading questions like, do you eat ice cream every evening? आइस क्रीम खाते हैं, कल क्या खाया, अगर 24 आवर्स रिकॉल लो तो ये खाया, ये खाया, ये खाया, ये खाया, फिर रात को आइसक्रीम खाई. आप आइसक्रीम
हर शाम को खाते हैं, आपको पता चल जाएगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी। यू डोंट यूज होल मिल्क डू यू? आप पूरा मलाई वाला दूध तो नहीं पीते हैं? वही पीते? अरे हमारे घर की भैंस है मैडम, एकदम मस्त दूध मिलता है। अच्छा घर की भैंस है, ठीक है, पर आपको दोपहर उबाल के पीना है, और नहीं तो फिर आप अपने लिए गाय का दूध पीजिए। मतलब दैट इज हाउ यू गेट द इंफॉर्मेशन। Suggest action that are possible for clients given their situations. सब कुछ बताया उन्होंने, समझ गए हम। अब मुझे ये लगता है कि आप ये कर सकते हैं, दिस इज फॉर यू। आप देख लो जितना होता है, ईमानदारी से करो और ईमानदारी से लिख के लाना। Repeat what clients say to make sure you understood them correctly. Earlier also I said paraphrasing. ठीक है, और हम तो 2 ही बार खाते हैं, तो मतलब आप लंच और डिनर खाते हैं, या सुबह खा लिया रात को खाया। दैट इज हाउ वी इंटरप्रेट एंड कम टू द conclusion that he is having this type of food habits. Show interest and empathy for client problem, जो बताया उसी के। Okay, I feel totally worthless. On one hand I want to follow this new eating pattern, and on the other I want to eat spontaneously. This is not working for me. ऐसा होता है। ये फोटो काका की लगाई, पर ये हुआ था एक बैंक के साथ कि मेरे लिए नहीं है। तो हम उनको फिर ये डुएबल टारगेट रखो ना। जैसे मैं एक्सरसाइज के लिए बोलती हूँ, तो साथ में मैं बोलती हूँ कि भाई 4 दिन का ही टारगेट रखो ना, 4 दिन वीक में करना है। ऐसा नहीं कि 4 ही दिन करना, 7 दिन। 4 दिन के बाद आपने 5वां दिन किया कि यस आज इस बार तो मैंने एक्स्ट्रा किया। 6 दिन 7 दिन बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होगी कि नहीं होगी? डुएबल टारगेट, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि उनको बोला एक्सरसाइज रोज करना है, या फिर ये रोज खाना है इस तरह से रूटीन में। उसके बाद वो आए बोले कि 4 ही दिन हुआ, नहीं कर पाया बाहर जाना। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। इतना तो आपने किया जो आपका बिल्कुल ही सेट नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, ऐसे वैसे कहीं भी खा रहे हैं, भर पेट समोसे खा रहे हैं। उस हिसाब से तो नहीं, आपने तो पूरे वीक में एक ही दिन खाया शाम को। इट्स ओके। सो दैट इज हाउ। Listen to what clients think and respect their feelings, even if information may need correction. आपके पास पूरा गूगल बाबा लेके आते हैं कई बार पेशेंट, उसमें तो ये लिखा, उसमें ये लिखा, या फिर वहां पर उसने मुझे ये बताया। ठीक है, आप उन्हीं के पास जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं बोलती, अभी ऐसा करके देखो। डिस्क्रिपेंसी रिमूव करना और सही इंफॉर्मेशन देना। सपोर्टिंग सेल्फ एफिकेसी, सी ये सब मिले जुले हैं, अपने को थोड़ी इतना कि ये करना, अभी मुझे एक्टिव लिसनिंग करनी है, अभी मुझे ये करना। दिस इज द होलसम अप्रोच वी नीड टू डेवलप, राइट? Look at the progress you have made in 6 months. Your food records are a testimony to how much you have been able. यही सब है कि आपने देखो आपने कितना डायरी लिखते हो ना, कितना कहाँ से कहाँ पहुंच गए। You have to be encouraging them all. बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है ना? कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा आपके पेशेंट, वो चीज को लो और उनको प्रेज करो और उनको एनकरेज करो, वो वापस ट्रैक पे आ जाएगा। गिव सजेशंस नॉट कमांड्स। मेरे हिसाब से व्हाट माय आइडिया इज, यू शुड डू दिस। Recognize and praise what clients are doing correctly, as I told earlier. Give only a little bit of information at a time. ये बार 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 बोल रही हूँ, बहुत सारा नहीं बोलना है। 3 to 4 small messages, ठीक है। यूज सिंपल लैंग्वेजेस। आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत टफ बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारा नॉलेज है। एक तो अभी वो व्हाट्सएप नॉलेज भी है, फिर इंग्लिश है, गूगल
नहीं, सिंपल नॉलेज जो कि उनके हिसाब से उनको समझ में आए पेशेंट को, वो बोलना है। आप हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो उसके टर्म में आपको बात करनी है। उसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आप लैंग्वेजेस सीखो, अलग अलग लैंग्वेज में अपनी डाइट की, अपने फूड की कौन सी आइटम को किस जगह में क्या बोलते हैं, एंड रियली रियली इट क्रिएट्स मैजिक। मैंने एग्जांपल दिया था, एक हमारे यहाँ डॉक्टर हैं सीनियर रेसिडेंट, उनके उनके पेरेंट्स आए थे, वो लेके आए थे कि मैडम से एक बार बात कर, मतलब डाइट कंसल्टेशन करना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम थी उनकी जो भी, तो वो लेके आया और मैडम शी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी कुछ भी, और ऐसा पर आप उनका एक चैट दे दो ऐसा व्हाटएवर, इनका आप जाओ मैं बात करती हूँ, ठीक है। फिर मैंने उनसे बात की, तत्ती तीनते मुझे थोड़ा सा पता था, मैं बीच में 2 ढाई साल मैंने कर्नाटक में काम जॉब किया था, मैंने पूरा बहुत सारी चीजें सीखी थी, अभी मैं बहुत भूल गई हूँ पर कभी कभी आ जाता है याद। तो उसमें से थोड़े से टर्म्स जो कि नॉट सो अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन था, मैंने उनको बोला। इनिशियली यू वोंट बिलीव, उनका मतलब लैंग्वेज यही था कि बेटे ने कहा फंसा दिया शुरू में, मतलब मुझे, बिकॉज शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज शी कुड नॉट स्पीक हिंदी और इंग्लिश। और मैंने जैसे उनको बोला ना, वो चीज एकदम अच्छा है। फिर उसने तुरंत बुलाया बेटे को वापस, एंड नाउ शी वाज रेडी टू लिसन टू द काउंसलिंग। शी अटेंडेड दैट सेशन। वहां से जाके वापस वो गए अपना हैदराबाद, वहां से हैदराबाद या कहीं, जहाँ भी, वहां से उन्होंने मुझे फोन किया और मैं वैसे ही डॉक्टर प्रदीप वो इंटरप्रेटर वाला काम कर रहे थे। सो दैट रियली वर्क्स, ठीक है। जैसे मैं गुजराती में हम जो बोलते हैं, मैंने गुजराती सीखी, गुजराती में जब बात करते हैं तो पेशेंट देते ओपन अप अपना, दैट इज मेन जस्ट कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जब आप बोल रहे हो तो सिंपल लैंग्वेजेस यूज करना है, पेशेंट समझ सके, और उसके लैंग्वेज में उस चीज को क्या बोलते हैं ये आप पूछो कुछ चीजें दिखा के, एंड increase your word power, and it will help in long run. Okay, ethical principles for counseling are very very important. You have to provide accurate information. Clients should be able to trust their dietitian, that dietitian's words and actions are truthful and reliable. पूरा हमारा आईडीए से स्क्रीन किया हुआ जितने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इट इज अवेलेबल, एंड एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक नॉलेज, वो ही बोलना है। वो उसके लिए आपके थरो नॉलेज लेके और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको इक्विप्ड होना है उससे। Keep clients information confidential. Clients need to know that dietitian will keep their information confidential except as needed for their treatment or recovery. That is very important, needed, very much needed. Respect clients autonomy. Clients have the right to make their own decisions without corrections. हमने अपना समझा दिया, फिर उन्होंने कुछ अगर ऑप्ट किया है, मान ले कई बार ऐसा होता है कि वो कोई सप्लीमेंट और ये वो लेके आ जाते हैं कि भाई ये मुझे दिया है, मैं ठीक है आपको लगता है आप खाइए, ये ठीक है, उनका उनका अपना ये है। वी आर नॉट सपोज टू endorse one thing over other. We can give options, and if somebody is opting for something, we have to respect to that. Keep clients' interest in mind, advise them based on professional assessment, and offer alternatives if you cannot help them. Do not harm, avoid any interventions that could harm or exploit clients emotionally, financially, or medically. आप उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करेंगे अगर आप किसी स्टडी में या कोई भी चीज में, उनके अनजाने में आप नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनको you are not supposed to charge them for
your this thing, that is unethical, right? Be fair. Treat all clients fairly and without discrimination. Respect clients' rights, dignity and individual differences. ये कौन से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, अफ्लुएंट हैं, जैसे भी हैं, आप उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी फेयर टू ईच एंड एवरी सिंगल क्लाइंट, राइट? Last but not the least, consider what strength you have to bring to the counseling situation and then build on them. एक मेरे पास वो है पूरा का जिस Calidra approach to counseling. It has been proven effective in many settings and captures the essential elements of effective counseling interactions. जो जैसे वो आते हैं अपने न्यूमोनिक्स, जैसे इंद्रधनुष के कलर, रंग, विबज्योर, जो रेनबो के कलर्स, तो उसके लिए याद है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green, red. This is something like that. Calidra approach. Greet the client, ask him to sit down and then exchange introductions. Ask the client about his or her situation and current practices using open-ended questions and familiar language. Listen to what the client and the caregiver says. Notice body language. इस सारा जो अभी आपको बताया है उसका ये gist है. Use probing questions and reflect back what the client says to make sure you understand it correctly. Identify the client's key problems and help select the most important ones to address. बहुत सारी problems है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. अभी के लिए ये important है. अभी ये देख लो, अभी आपको सर्जरी होनी है तो पहले हम शुगर कंट्रोल करेंगे. अभी बाकी आपका जो स्टोन है या फिर ये चीजें हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ये ऑपरेशन के बाद, राइट? अभी की प्रॉब्लम ये है, प्रायोरिटाइज करना होगा. देन डिस्कस ऑप्शंस, considering what is realistic and using visual materials to engage the client and caregiver in discussion. आप मॉडल्स हैं वो बना सकते. विजुअल ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है? वो तो आप लोग बनाते आए हो अभी तक. Keep practicing that. जो pictures are more effective rather than just this thing. Verbal instruction. Recommend and negotiate a small doable action explaining the rationale and benefits. Ask the client to repeat what he or she understood from the discussion and what actions he or she agrees to try it at home. ये भी बताया. Make a follow-up appointment and ask the client to repeat the date. कब आने वाले हैं? 8 तारीख. 8 तारीख को आएंगे आप, तो आप कम से कम 3 तारीख से आप लिखना शुरू करो, 5 दिन का लेके. तो पहली तारीख से ही लिखो ना, 8 दिन का लिख के आओ, पूरा रिपीट होगा. फिर मैं देखूंगी कि अभी उसमें और क्या चेंज करना है. थैंक यू. This is my email address. This is my number. My students, my colleagues are always welcome to contact me anytime. अभी आपके questions हो तो बोलो बच्चों. Students, please come up with the questions. Any question from the session or off the session are welcome. और सो नहीं गए हो तो. Yeah, that's what I was about to ask to students. क्योंकि Everyone अभी बहुत can on their cameras. Let me see all the students. Everyone. जागो मोहन प्यारो. Today's sessions were totally practical approach, जो कि आपको lively अपने patient से बात करनी है. Sheetal ma'am have explained it very well how she is doing in her practice in her hospital. So that is the practical approach you have to follow in your practice, right? And even the guidelines, what Amita ma'am have told, you have to consider all the guidelines before you counseling your patient, right? अपने जो पेशेंट से हम बात करते हैं, that should be a personal, okay? पर्सनल अप्रोच के साथ हम लोग अपने पेशेंट को डील करते हैं, बट उसके पर्सनल अप्रोच के साथ उसमें आपकी साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए. And that will come only and only if you study about the guidelines and all the diseases, and every main disease you should know
their condition you should know, and then only you will be able to plan the diet and talk before a client or patient, right? अगर पेशेंट आपके सामने आपको डिजीज बता रहा है और आपको पता ही नहीं है कि वो डिजीज में होता क्या है, यू वोंट बी एबल टू टॉक टू द पेशेंट इन एनी केस, ठीक है? तो मेन चीज वही आती है, थ्योरेटिकल नॉलेज, देन वी कम टू द प्रैक्टिकल थिंग। एंड ऑब्वियसली जैसे मैम ने बताया, शीतल मैम ने बताया, अमिता मैम ने बताया, द फर्स्ट वेरी अप्रोच इज यू हैव टू लिसन टू द क्लाइंट, यू हैव टू लिसन टू द पेशेंट व्हाट दे वांट टू से। ओके, पेशेंट आपके सामने बैठा है, यू डोंट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना शुरू नहीं कर दोगे कि ऐसे खाओ वैसे खाओ, ये खाओ वो खाओ, ऐसे करना है वैसे करना है। दे विल नॉट कम बैक टू यू, दे विल नॉट लिसन यू एट ऑल। पहले आप उनकी सुनो, ओके? उनकी क्या कंडीशन है, वो कैसे खाना खाते हैं, द हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी केस। So you have to take the history of the patient, you have to listen to the patient, you have to listen to their attendant also, then you have to speak, then you have to tell them that what is the right approach, right? Any questions? I'm expecting questions for this because this is a very practical sessions we had today. This is the main thing you will be coming across in future. Ramza, why are you quiet now? Active listening. Yeah, tell me. हाँ मैम, अगर कोई ट्रॉमा से मतलब ट्रॉमेटिक कंडीशन में है पेशेंट, जिसके साथ कुछ अब्यूज हुआ है या कुछ भी ऐसा है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, तो फिर उस टाइम पे उससे कैसे डील करते हैं आप? Sheetal ma'am, you would like to answer? हाँ, उसको रीअश्योरेंस चाहिए। तो अगर पेशेंट बात करने की कंडीशन में है और तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर टॉकिंग अबाउट डाइट हिस्ट्री, राइट? या फिर रीअश्योरेंस, कोई भी डाइट बाद में आएगा, पहले एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है, इफ यू अप्रोच दैट वे, द पेशेंट विल ओपन अप डेफिनेटली। खाना तो खाना पड़ेगा ना, खाना तो खाना ही है, आप हंस के खाओ या रो के खाओ, ठीक होना है, यू हैव टू फाइट बैक, एनीथिंग बैड हैज हैपेंड, यू कैन नॉट गिव अप। और फूड, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है, फंक्शन ऑफ फूड, फूड एज मेडिसिन, फूड फॉर इमोशन, मतलब शेयरिंग आवर इमोशंस, है ना, केयरिंग, शेयरिंग, सब। हम किसी से बहुत क्लोज होते हैं तब हम उसको अपने घर पे खाने को बुलाते हैं, टू डेवलप अ बॉन्ड। तो ये वाली चीजें जो है वो मैटर करेगी, वो वाला सेंस अपने में, उस सेंस से अपने आप को चार्ज करके यू कैन अप्रोच द पेशेंट एंड शी विल रिस्पॉन्ड and she will agree to have food and follow your instructions. One suggestion I would like to give in this कि अगर patient traumatic condition में है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो let you talk to the attendants, you can talk to the patient के साथ जो भी आया है, you have to talk with them, you have to make them understand कि आप patient आपका इस condition में है, तो उसको आपको कैसे deal करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर पेशेंट नहीं बोल रहा है आपसे, यू डोंट गिव अप, यू गो अगेन एंड अगेन टू द पेशेंट, यू टॉक टू हिम, यू जस्ट आस्क कि आपने खाना खाया। वो आपको बोलेगा नहीं, बस ऐसे हाँ या ना ऐसे जरूर करेगा। अगर वो एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, यू कीप आस्किंग हर, यू गो अगेन एंड अगेन टू दैट पेशेंट एंड यू कीप आस्किंग कि आपने खाना खाया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है, कभी ना कभी वो आपसे बात जरूर करेगा, ठीक है? You have to make a bonding with the patient. Yes, yeah, I was talking about the psychological trauma. Sorry, patient बोले। और आपको पता है आर्टी फीडिंग पे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो बेहोश हैं, उनको भी मैं कान में बोलती हूँ, उनके रिलेटिव को मैं क्या बोलती हूँ, एक म्यूजिक थेरेपी, कुछ भी आप लगाओ अच्छा, उसके हेडफोन लगा के, जो उनको म्यूजिक पसंद होगा, एंड ही विल टेल कि अगर उनको सुनना नहीं है ना, तो एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि नहीं सुनना है। और आई यूज्ड टू गो टू द पेशेंट, कान में बोलते हैं, अभी हम लोग है ना आपको ये दे रहे हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी हो जाओ, फिर मुंह से देंगे, अभी तो सब कुछ मिक्स करके हम नली से दे देते हैं। एंड रियली इट वर्क्स आईसीयू के पेशेंट्स में भी। मतलब कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा हम अगर ऐसा करें। दैट शुड बी द अप्रोच।
Yeah, very true. Ma'am, your question to the students? I'll tell later, है ना? I'll be sending, Okay, fine. है ना? Yeah. अभी नहीं. So any other question? Is Sazia ma'am there? I think she's there. Okay. बच्चों तुम लोग बाद में ये सेशन पूरा हो जाए उसके बाद आओ तुम लोग हॉस्पिटल में. फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट. ऑनलाइन सिर्फ नहीं चलेगा, उससे वो पर्सनल टच नहीं आएगा. आना पड़ेगा सब. Yeah, एक बार ट्रिप का. for that. Okay, thank you, Sejal ma'am. That was a really great session. And I think श्रुति. बच्चों ने काफी कुछ सीखा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से. That was a really fabulous to have you here. Thank you for the nice words, Shruti. Thanks a lot, ma'am. So students, stay back. We will have the attendance. Do I take or not? I think everyone is present today. I've already taken. So there is nothing like I will take in the end or in the middle. I can take any time of the day. Fine. So you don't have to sleep in the session. कुछ तो बोलो. Everyone is so quiet today. Hello. Anyone want to say something? Shruti, I have to stay back or I may leave? You can leave, ma'am. No problem. Okay. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Is Dhruti is here? Is Bansri is here? Because I can't see Bansri and Dhruti. Yes, ma'am. Okay. And Bansri? Yes, ma'am. Okay. And one more girl was there. Jagruti, your network was issue. You were not able to join. Okay, fine. So I just want to tell you one thing regarding the feedback form. Okay. So everybody is know that you have to fill the feedback form. आपको feedback form fill करना है. ठीक है. तो आपने जब भी वो लिंक ओपन करोगे every session के बाद तो आपको ये feedback form fill करना है. इसमें जो questions हैं I just want to explain you all for that. कि इसमें पहला क्वेश्चन है the subject matter was presented effectively. सब्जेक्ट मैटर मतलब कि जो पीपीटीज में उन्होंने आपको प्रॉपरली जो सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट लिख के दी है दैट इज क्लियर टू यू और नॉट. जो स्पीकर आपको सब्जेक्ट मैटर में थ्योरी लिख के देते हैं पीपीटी के अंदर दैट इज क्लियर टू यू और नॉट. सो यू हैव टू टिक स्ट्रांगली डिसएग्री न्यूट्रल एग्री और स्ट्रांगली एग्री. राइट. द अदर क्वेश्चन इज द पेस ऑफ द लेक्चर वाज सेटिस्फैक्टरी. पेस ऑफ द लेक्चर मीन्स कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट वो प्रोसीड कर रहे हैं लेक्चर के लिए दैट इज ओके और नॉट ओके. ठीक है. पॉइंट टू पॉइंट उनकी एक्सप्लेनेशन ठीक है कि नहीं है. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर वाज सफिशिएंट फॉर द मटेरियल कवर्ड. राइट. जो मटेरियल आज जैसे सेशन थे अमिता मैम का और शीतल मैम का दैट इज लाइक उनका 1.5 आवर्स का जो लेक्चर था that is sufficient or you need more time for that. Right. The speakers were knowledgeable. That is obviously you can tell because we have all the renowned speakers from all over the Gujarat. They are all experienced more than 5 to 20 years. Right. So you have to fill according to this because we got in the previous session we got many glitches in this. So I just want to explain कि इसमें exactly आपको क्या चीज को देकर fill करना है. Right. और overall experience आपका कैसा रहा? You can rate that excellent, good, fair and poor. Fine. Anything else? Any student want to share anything? Any feedback? कुछ तो बोलो. आज सब चुप है. हेलो मैम. या बोलिए. हाँ मैम, मेरा
रोल नंबर 107। मेरा फोन खराब हो गया है और मैंने मेरे फ्रेंड के फोन से अटेंड किया क्लास। या ओके, आई गॉट इट। हेलो मैम। या बोलिए जागृति। जागृति 109। हाँ जागृति, आपका नेटवर्क इशू था आज, आपने बहुत बार लॉग आउट किया, लॉग आउट किया। नेट खत्म हो गया था, पता ही नहीं चला, हर बार बाहर ही निकल जाती थी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट 10 मिनट्स आई विल वेट और 15 मिनट्स, उसके बाद मैं वेटिंग रूम बंद ओपन कर दूंगी। देन एवरीबडी आई कैन एनालाइज कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, राइट? ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट सेशन टुमारो। ठीक है, यू कैन लॉग आउट। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय। Thank you, ma'am. बाय। क्यों मैम?